नमस्कार सर। सभी को प्रणाम। नमस्कार दादा मजूमदार साहब, नमस्कार जय भारती साहब। आज सबको नमस्कार जी। सबको नमस्कार जी, प्रणाम। आज हम एक ऐसे चैप्टर पे हैं जो कि एक लॉजिकल सवाल दिमाग में उठता है कि अगर ये महाराणा बप्पा रावल से लेकर के और लास्ट तक जो राजा महाराणा थे, इन लोग इतने पावरफुल थे, तो ये लोग औरंगजेब के मरने के बाद में गए कहाँ, क्या हुआ उनके बारे में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब लोगों ने भारत के स्कूलों में पढ़ाई की है, तो वहां पर हिस्ट्री में तो बिल्कुल गायब ही है। हिस्ट्री में तो बहुत कुछ गायब है, ना तो अमर सिंह के बारे में बताया गया, ना बप्पा रावल के बारे में बताया गया। वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताते हैं और बाद में फिर सीधा कूद करके आ जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पानीपत की लड़ाई में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में मार दिया गया। फिर बाद में मोहम्मद तुगलक ने ये कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कर दिया, बाबर ने ये किया, इधर ऐसा हुआ वैसा, मतलब सब में दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो बाहर से आया उसने यहाँ पर हिंदुस्तान के राजाओं के ऊपर आक्रमण किया और उनको हरा करके और यहाँ पर राज किया, ये बताते हैं। और फिर जहां पर ये थोड़ा सा गफलत में होते हैं, जैसे कि 1857 का जो हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसको वही बोलेंगे, उसको ये सिपाही मुठनी बोलते हैं। मतलब वहां पर भी खुरापात करने को तैयार बैठे होते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, कम से कम 6 या 7 जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो सारे अंग्रेज थे। उसके बारे में भी ढंग से नहीं लिखते हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ हम तीनों में से किसी को नहीं मालूम था कि हाँ भी ऐसा भी कुछ है। आज की डेट में इंटरनेट बिल्कुल सर, ये था। और टू माय सरप्राइज सबसे बड़ा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे बोलते हैं, तिलक साहब के टाइम में भी अंग्रेज कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। 1915 में हमारे एक क्या बोलते हैं, अफ्रीका से इंपोर्ट किए जाते हैं एक नेताजी, जिनको कि जैसे कि भारत कभी रहा ही ना हो, उनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। मतलब 1943 में, इससे पहले भारत नहीं था, राष्ट्रपिता तुम बन के बैठ गए, पता नहीं किसने बनाया। खैर, जो हिस्ट्री में जो भी गड़बड़ हो रहा है, हमको तो ठीक है, हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारे को डॉक्टर उमेंद्र रत्नू की एक किताब मिली जिसमें उन्होंने पूरा करके रख दिया था। बट स्टिल आई फील दैट अगर उमेंद्र रत्नू साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में होते तो शायद ये नहीं लिख पाते थे। ये आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसे लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले वो पुरानी की किताब पढ़ी थी नेहरू के बारे में, वैसे ये किताबें हैं आज की डेट में लिख करके आ रही हैं। फिल्मी जगत में जैसे ये हो रहा है कि कश्मीर फाइल के बारे में लिखा गया, केरला स्टोरी बनी, अभी वो वैक्सीन वार हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही है कि केंद्र में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आज की डेट में क्या बोलते हैं उसको, अगर आप एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे तुम्हारे को। महात्मा गांधी तो बोलते थे, एक मारा दूसरा गाल दिखा दो, लेकिन आज की डेट में ये होता है, तुम एक मारोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम हमको छेड़ोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब आज मेरे को एक बात की बहुत खुशी हुई, पता नहीं आप सब लोगों ने पढ़ाई होगा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा मतलब रखते हैं। इजराइल के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया, हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं उनके ऊपर। तो डोम है ना उनका, वो डोम, एक रॉकेट शायद अंदर घुस गया, एक ही घुसा। मैं बोल रहा हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है किसी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। हाँ जी, ठीक है। और पैलेस्टीनियन को उन्होंने बोला कि ये टेररिस्ट है। बिल्कुल, ये भी बोलने के लिए दम चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो कल एक सुन रहा था कि एक बार हाँ हुआ क्या था कि 1971 वार से पहले हेनरी किसिंजर साहब वार को, मतलब जब बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी तो उस वार को अवॉइड करने के लिए वो पाकिस्तान आए थे। और जब उस समय क्या होता था, जब अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी कोई आता था तो वो पहले, जब अगर पाकिस्तान होता तो बैलेंस करने के लिए इंडिया भी आता था। जब वो इंडिया आया तो प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनसे मिलने के लिए उसने इच्छा जताई थी। आया था तो प्रधानमंत्री से मिलना ही था, उनसे बात करनी थी।
तो सवेरे 9 बजे या 10 बजे का टाइम था हेनरी किसिंजर से मिलने के लिए। इंदिरा जी ने मॉर्निंग में 7 बजे जनरल मानिक साहब को फोन किया, क्या कर रहे हो भाई? बोला अभी उठा हूँ, चाय वाय पी करके अभी नहाऊं धोऊंगा, उसके बाद में ऑफिस जाना है। तो बोले नहा धो करके और पूरी यूनिफॉर्म के साथ में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचे, वहां पर तो इंदिरा जी के साथ में उनकी कुछ मीटिंग हुई। मानिक साहब ने खुद अपने ये मेमोयर में लिखा है। उसके बाद जब हेनरी किसिंजर आया और बैठे तो इंदिरा जी ने बोल के रखा था कि मानिक साहब को कि तुम कुछ बोलोगे नहीं, सिर्फ पूरी यूनिफॉर्म में पूरे डेलिब्रेशन के सामने बैठे रहोगे। और बात हुई, ये हुआ। बाद में बोले कि मैं दिखाने के लिए 2-4 सवाल आपसे पूछूंगी, आप उसका जवाब दे देना, उसके बाद में मामला निपट जाएगा। ये हुआ। So the message has gone to American sound and clear that India is not going to buckle down under your pressure. Even our military general is here and I have consulted battle ready military general before meeting you. हाँ, बैटल रेडी, मतलब बैटल रेडीनेस भी एक मैसेज जाती है। और उसी कंटेक्स्ट में मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब 2015 में जयभारती साहब, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कभी पढ़ता रहता हूं लेकिन मौका नहीं मिलता, आज ये इस कंटेक्स्ट में बोलने का मौका मिल रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू ही हमारे दुश्मन है। उस बारे में बोलना चाह रहा हूं। जो हिस्टोरियन है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको तो मैं आज की डेट में तो प्रोसिक्यूट ही बोलूंगा, बेस्या है वो लोग। उन लोगों ने जो नैरेटिव तैयार किया, जो विमर्श तैयार किया है, वो ये बोला है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। 2015 में बंबई में एक अखबार था, हिंदी में उसका था, विवेक करके अखबार था, उसको हिंदी में उनको लॉन्च करना था। तो उसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर को बुलाया, मनोहर पर्रिकर को बुलाया। मनोहर पर्रिकर ने 2015 में एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात ध्यान देने लायक है। उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका सत्यानाश 2 प्रधानमंत्री ने किया है। मनोहर पर्रिकर ने किसी का नाम नहीं लिया। ये जो कांग्रेसी पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, ये लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे मनोहर पर्रिकर ने बोला तो इसका मतलब नेहरू होता है, इंदिरा गांधी होता है, ये होता है। जो मैंने पहले वाली कहानी सुनाई उसमें यह था कि इंदिरा जी का तो बिल्कुल शी वाज आयरन लेडी, नो डाउट। जी सर, उसने अपनी गद्दी बचाने के लिए एक अलग से गेम खेला, वो एक अलग बात है, बट बहुत बवाल हुआ। बाद में फिर कभी पत्रकारों ने पूछा मनोहर पर्रिकर से, तो मनोहर पर्रिकर ने बोला कि भाई ठीक है, मेरे से कोई पूछ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ लो, आप लोगों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप दुनिया भर में सिर्फ पॉलिटिशियन से पत्रकार वो पूछते रहते हो, सवाल पूछ रहे, जवाब ढूंढो कहीं से। मालूम पड़ा कि वो 2 प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एक मोरारजी देसाई और आईके गुजराल। मोरारजी ने कहूटा में एटॉमिक प्लांट की इंफॉर्मेशन जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी तो उसको जियाउल हक को बता दिया। उसके चक्कर में एजेंट्स मारे गए, सबको मार दिया था वहां पर, जितने एजेंट थे सबको मार दिया था। और इस बेवकूफ ने, पाकिस्तानी बॉन्ड गुजराल ने का पूरा पाकिस्तान की डेस्क ही बंद कर दी थी। जो तो पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट थे, जो हमारे लिए काम करते थे, बेचारे देवर एक्सपोज्ड। तो इन लोगों ने अब ये क्या है, ये इतिहास में कभी लिखा नहीं जाएगा। अब हो सकता है मोदी साहब कोई इतिहास की बुक लिखाएं और शाह साहब कोई लिखवाएं तो बाद में उसमें आ जाए, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी मौका याद आता है, मौका मिलता है तो बोल देता हूँ। अब ये जो चीज है, इन लोगों ने जो हमारे को बेवकूफ बनाया है कि राजपूत बेवकूफ थे, राजपूत तो हार गए, दैट वाज विद इंटेंशन अप्लॉय, जिससे कि हमारे हिंदुओं के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए, यार हम तो हमेशा हारते रहे, हीन भावना पैदा हो। व्हाट इज बीइंग डन बाय योर चीफ मिनिस्टर इन बंगाल, मैं तो उसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जी सर, आप पढ़ोगे मैं पढ़ूं? जैसा आप बोलते हो। चलो आप पढ़ो, आप, फिर मैं बाद में भी अगर बीच में, क्योंकि ये 39 पेजेज हैं और इतने पेजेज हैं, ज्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इसकी समाप्ति कर ही देते हैं।
इस किताब को जितना पढ़ो ना उतना और पढ़ने का मन करता है दोबारा से, क्योंकि रत्नो साहब ने बहुत मेहनत किया है इसमें, बहुत मेहनत किया है. Of course, he has committed. मतलब I think he had intention कि जिससे दूसरे लोग भी इसको पढ़ें. इस चक्कर में वो बुद्धिज्म की बात करता है, इसमें बुद्धिज्म को नंगा कर रहा है. वो राजा दाहिर को मरवाने के लिए जो बुद्धिस्ट थे ना वहां पर उन सिंध में, उन लोगों ने पूरा उसको हेल्प किया था मीर कासिम का. So he's दिखाई दिया? जी सर. हाँ जी सर. Silence of the Lions. While we are in awe of the amazing stories of valor and fortitude of the Maharanas of Mewar in fighting the onslaught of Islamic imperialism on our soil, we must also assess as to what happened to this glorious dynasty in particular, and the martial spirit of Rajputs and other martial communities in general, especially after Christian era 1700. With the death of Aurangzeb in Christian era 1707, the Mughals went into oblivion. So did the Mewar Sisodiya dynasty very mysteriously. We will try to assess the causes of this overall decay of the Rajputs, Charans, Jats, Sikhs, and the associated. ये नहीं अच्छा लग रहा है, यही ठीक है ना. And the associated martial communities in fighting the imperialistic forces. With the advent of the British, a huge complicating factor had taken birth in the already muddy waters of the geopolitics of the subcontinent. British imperialism is a separate topic with its own dynamics and connotations. We will restrict ourselves to studying and deciphering the changed contours of Islamic imperialism in the Indian subcontinent. The Rajputs and allied martial communities of Rajasthan and the great people of Mewar, irrespective of their castes, had been fighting Islamic imperialism for 1,000 years. Hence, it is safe to conclude that a civilizational fatigue set in the people of Mewar and Rajasthan. James Todd put it in beautiful words when describing the conflict between Prithviraj Chauhan and Muhammad Shahabuddin Ghori in the Second Battle of Taran in Christian era 1192. The capture of Delhi and its monarch Prithviraj, the death of his ally of Chittor, with the bravest and the best of his troops, speedily ensured the further and final success of the Tartar arms. And when Kannauj, Raja Jayachand fell, now was left to contend with Shahabuddin, the possession of the regal seat of Chauhans. Scenes of devastation, plunder, and massacre commenced, which lasted through ages, and during which really all that was sacred in religion and or celebrated in art was destroyed by these ruthless and barbarous invaders. The noble Rajput, with the spirit of constancy and enduring courage, seized every opportunity to turn upon his oppressor. By his perseverance and valor, he wore out entire dynasties of foes, alternatively yielding to his fate or restricting the circle of conquest. Every road in Rajasthan was moistened with torrents of blood of the spoiled and the spoiler. But all was to no avail. Fresh supplies were ever pouring in, and dynasty succeeded dynasty, heir to the same remorseless feeling which sanctified murder, legalized spoliation, and defied destruction. In these desperate conflicts, entire tribes of Rajputs were swept away, whose names are the only mementos of their former existence and celebrity. The key words in Todd's explanation are fresh supplies were ever pouring in. How long could the citizenry of an affluent, educated, and progressive society like Hindus endure the barbarians pouring in from our western borders? It is quite a natural turn of events in the source of the trajectory of a nation that people get tired of fighting and simply given to the wishes of their tyrants. Fortunately for Hindus, this fatigue against Islamic imperialism happened
when other powers like the Marathas in the south and the Sikhs and the Jats in the north, along with the Rajputs, the Ahams in the east, picked up the baton from the tired Rajputs and Kshatriyas of Rajasthan, and hence the fight against Islamic imperialism continued. The power struggle with the Hindus of this nation changed its dimensions to the advantage of the rise of Marathas as the bearers of the Hindu flag against Islam. Though it was a great blessing for a Vedic motherland, but the Kshatriyas of Rajasthan were relegated to the background of this new force of Hindu resistance. There's little to complain about this spontaneous shift of the Hindu resistance from Mewar to the Marathas, as events ran their natural course. What is shameful and highly objectionable is the systemic degradation of Rajputs and other martial communities, their struggles with Islamists in the next 200 years by leftists, British imperialists, jihadis, and a section of Hindus themselves. This entire cabal got together to create lies around the glorious Rajput resistance, especially in the last 70 years of post-British India, where it has become an industry to belittle Hindu martial castes and traditions. The direct consequence of this onslaught on Hindu martial races was the introversion of our warriors, especially the Rajputs. When people are constantly attacked for their lineage and the deeds of their ancestors, they respond either by belligerence or introversion. The Rajputs responded by both. A section of Rajputs took to rowdy behavior on streets and in family lives, while the majority succumbed to this propaganda and receded from public life. The gross indifference in the psyche of Rajput population to Hindu plight has been a direct consequence of this leftist jihadi onslaught on the glorious past of Rajputs. Broadly, Rajputs became a schizophrenic society confused between the actual innate martial leanings as protectors of women and Hindu Dharma on one side versus the leftist jihadi depiction of Rajputs as losers and exploiters of the rest of the Hindu society. This introversion and inaction of the martial communities suited the leftist jihadi agenda as the Islamic imperialism would continue unabated in the subcontinent now, with the Hindu muscle paralyzed or atrophied into inaction. The poison of ahimsa as an absolute principle injected into Hindu consciousness by Mr. Mohandas Gandhi and his followers proved to be the last nail in the coffin of Hindu martial resistance to Islamic imperialism. Ahimsa is a relative principle definitely worthy of pursuit in civilized. ये क्या हुआ? एक मिनट ये क्या हुआ? सर हाईलाइट मत कीजिए सर, मैं पढ़ ठीक है। ये हाँ, एक मिनट, ये क्या है? ये नोटबुक को कैसे बंद करूं? हाइड नोटबुक अच्छा यहाँ पे छोड़ दे सर, जैसा रहना दीजिए, खाली आप पेज. The poison of ahimsa as an absolute principle injected into Hindu consciousness by Mr. Mohandas Gandhi and his followers proved to be the last nail in the coffin of Hindu martial resistance to Islamic imperialism. Ahimsa is a relative principle definitely worthy of pursuit in civilized societies, but has no place when dealing with violent ideologies. The average Hindu was fed the falsehood of submission as a virtue and resistance as a vice. Can we say that this bloody Gandhi was the main person who was responsible for all? Yes. He was the puppet of Islamists in India. Absolutely. The average Hindu was fed the falsehood of submission as a virtue and resistance as a vice. The meek Hindu, who was always preoccupied with sterile speculations, was glorified to such an extent that the Kshatriya Hindu simply receded into oblivion. The lie of Islamic victories and the falsehood about
continuous defeat of Hindu kings was mainly popularized by British historians alike in the 19th and the 20th century. Many Hindus, blinded by the veil of ahimsa, participated in furthering these lies in the mistaken belief that they were somehow proving the superiority of India's spiritual culture over the materialistic culture of the West. None of these Westerners and Hindu propagandists realized that the cowardice, sloth, and capitulation to violent invasions may have no place in Hindu spirituality. But since this version of Hindu history became a very convenient tool to advancing Islamic imperialism, it continued unresisted. This dilemma has been beautifully explained by the great Maharshi of the last century, Sitaram Goel. Indian history became a history of foreign invaders, Arabs, Turks, Uzbeks, Persians, Portuguese, Dutch, French, and the British, rather than a history of the greatest civilization that the world has known, and later on, of Hindu heroism, which fought and ultimately frustrated all foreign invaders. Goel goes on to sum up this existential schizophrenia of Hindus thus: India itself became a subcontinent seething with a mass of heterogeneous humanity rather than an ancient and invisible Hindu homeland. Indian people became a conglomeration of nationalities, racial groups, and religious communities which are finding it difficult to coexist in peace, rather than a national society that is trying to reform itself and reclaim some of its unfortunate sections alienated from it by successive waves of attacks by Islamic, Christian, and modern Western imperialism. Goel goes on further to exactly describe the consequences of such deracination of Hindus through the propagation of such lies. It was the disfigured version of India's history which gave a good conscience to the British imperialist, while he pulverized Hindu society, plundered Hindu wealth, and poured undisguised contempt on the Hindu culture. It was this version of history that emasculated Hindu society and emboldened the residues of Islamic imperialism to stage street riots and then walk away with precious parts of the Hindu homeland, thus consolidating an aggression that had not succeeded even though mounted repeatedly for more than 1,000 years. It is this version of India's history that is being invoked by the fifth columns of Islam, Christianity, and communism, each of which looks forward with the help of foreign finances and, if need be, foreign firearms. And it is this version of India's history which is being promoted by power-hungry politicians who woo the Muslim vote bank while they divide the Hindu society into mutually hostile camps. The surest way of propagating this defeatist version of Hindu history was to demean and demoralize modern-day Rajputs along with other martial communities. दादा एक मिनट, तो आज भी यही हो रहा है. आपका इंडिया अलायंस क्या कर रहा है बिहार में? कितना सही लिखा है भाई. जवाटी साहब, आप बताइए, पहले मैं आगे पढ़ने दूंगा तभी, इसको भी नहीं पढ़ने दूंगा. आप बताइए क्या दादा आपने पूछा मुझसे कुछ? मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लिख रहे हैं कि आज की डेट में मुसलमानों की वोट लेने के चक्कर में हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, मुसलमान डिविजन ऑफ हिंदू वोट बैंक आल्सो, लोग भी उनको ममता बनर्जी टाइप लोग, लालू प्रसाद यादव टाइप लोग तो यही करते रहते हैं ना हमेशा. नहीं, एक और चीज है ना, डिविजन ऑफ द हिंदू सोसाइटी इनटू म्यूचुअली हॉस्टाइल कैंप्स सच एज द एक्सरसाइज अंडरटेकन इन बिहार. तो दादा इतना कास्ट बनाते. यस, करेक्ट. ये तो 47. दादा एक बार बताओ, वो जो कास्ट का सेंसस हुआ है उसमें मुसलमान की परसेंटेज कितनी है बिहार में? कम है, उसमें कम है. ये तो बोल रहे हैं कि जिनका संख्या ज्यादा, तो उसमें तो दलित ओबीसी सेंसस वो क्या बोलता है, ब्राह्मण के बारे में बोलता है, कुर्मी के बारे में बोलता है, यादव के बारे में बोलता है, सबके बारे में बोलता है, बट वो मुसलमान के बारे में नहीं बोलता. नहीं बोलता नहीं है, उसमें घुसा दिया ना ओबीसी, दलित, वो सब में अदर बैकवर्ड कास्ट. जी सर,
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में घुसाड़ दिया क्या उनको? कहाँ घुसाया उनको? नहीं, पूरा उसमें नहीं घुसा है। इन लोगों में पासमानदा मुस्लिम जो हैं वो तो मतलब दलित भी हैं, कुछ ओबीसी भी होंगे, वो सब में डाल दिए होंगे और क्या। एक्चुअली ये सर्वे है सर, ये एक्चुअली सेंसस नहीं है, ये सर्वे है। लेट अस मेक इट, आई मीन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सर्वे एंड अ सेंसस। ये सिर्फ सर्वे है, एक क्या बोलूं मैं, अ स्मोक स्क्रीन क्रिएटेड टू डिवाइड द सोसाइटी, नथिंग मोर देन दैट। और ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि बाकी लोग भी करें इसको, और स्टेट्स भी फॉलो करें इसको, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है। डिक्लेयर किया ना कि वो भी करने वाला है, राजस्थान में करने दीजिए। करने वाला है वो। जी जी जी। दादा बीबी दादा, आप पूछ रहे थे ना कि ये इंडिया अलायंस और जो पॉलिटिशियंस, दादा ये तो 47 में शुरू हो गया, ये जो वक्फ बोर्ड बनाया और ये सब बनाया, ये तो अपीजमेंट उसी तरह से शुरू, तो नींव तो रख दी गई थी। जी बिल्कुल सही। The surest way of propagating this the surest way of propagating this defeatist version of Hindu history was to demean and demoralize modern day Rajputs along with other martial communities. Let us now decipher and simultaneously counter the myths propagated around the Rajput resistance to Islamic invaders one by one. 1. Rajput Hindus lost all battles. The first attack of Islamists on India was by Muhammad bin Qasim on Raja Dahir in the 8th century Christian era. After being repulsed twice by Dahir, Qasim aligned with the Buddhists of Sindh and managed to defeat and behead Dahir. A Hindu confederation led by Bappa Rawal defeated subsequent Arab invaders, even chasing them up to Iran. Bappa then went to Afghanistan, uprooted the Islamic ruler Salim, and put his nephew in his place. For 500 years, Arab Islamists continued, जो आप बोल रहे थे सर बुद्धिस्ट के बारे में, attacking Hindu kings, and only succeeded in defeating Prithviraj Chauhan of Ajmer in Christian era 1192 at the Second Battle of Taran. All we hear from our history books is the defeat of Prithviraj by Muhammad Shahabuddin Ghori, but there's no mention of the 500 years of interim, when each and every attack of Arab invaders and Islamic zealots was repulsed by great kings like Gurjar Pratihar King Nagbhat, Lalitaditya Muktipad, Christian era 720 to 764 of Kashmir, Kuman second and third of Mewar, Shakti Kumar, Jatra Singh, Anand Pal, the Shahi dynasty, the Chandelas, the Chalukyas, and numerous such kings who faced and defeated Arab Islamists. Ghori himself was defeated by Mul Raja of Gujarat in Christian era 1178 and his army destroyed. These names have simply been erased from our history. Absolutely correct, sir. Do we even realize? जी सर, कभी किसी ने पढ़ा मूलराज के बारे में कि मूलराज ने घोरी को हराया था हिस्ट्री में? नहीं। देखो ये तमाशा है। Yes. Do we even realize how Islamic murderers have been forced to change their ways and goals in the subcontinent due to the glorious Hindu resistance? The most violent assault on our nation happened at the end of the 10th century when Mahmud of Ghazni attacked Bharat 12 times before finally plundering Somnath temple in Christian era 1026. अच्छा, ये 12 बार अटैक किए, not 15 times. So we stand corrected. Every single time Mahmud had to retreat back to his home. He did cause massive plunder and destroyed temples, but was always being chased by Hindu armies led by very courageous and committed Hindu kings. The initial years from Christian era 1005 to 1015, Mahmud was resisted by the Shahiya dynasty, Anand Pal, Trilochan Pal, and Bhim Pal. Kept fighting him in his campaigns. Then from Christian era 1018 to 1022, Raja Nand of Khajuraho and
Vidyadhar Chandela resisted him, and 3 times he had to return to Ghazni after exchanging gifts with these kings. This is important. After exchanging gifts with these kings, a glimpse into what Mahmud of Ghazni faced in his raid on Somnath temple in Christian era 1026 will tell us a lot about the grit and resolve of Hindu resistance. To quote from Muslim annals, Farishta writes, the Hindus, urged by despair, returned to the defense of the works and made so spirited a resistance that the Mohammedans, unable to retain their footing and wearied with fatigue, fell back on all sides. Ibn al-Asir's account makes a very sad reading as to how our forefathers fought, literally with bare hands against the well-armed Afghan barbarians. Band after band of the defenders entered the temple of Somnath and with their hands clasped around their necks, wept and passionately entreated him. Then again they issued forth to fight until they were slain. मतलब पहले मना किया, मतलब मना नहीं, निवेदन किए होंगे कि मत अटैक किए, लेकिन तो सुनते तो नहीं थे उन लोग. उसके बाद वो लड़े जब तक वो मर नहीं गए. Khond Mir also testifies to a bitter struggle lasting 2 days, after which those ignorant men ran in crowds to the idol temple, embraced Somnath and came out again to fight until they were killed. इनको ignorant कहा जा रहा है हिंदुओं को. 50,000 infidels were killed around the temple. It is a documented fact. 50,000 लोगों को मारा था सोमनाथ मंदिर को बचाने के चक्कर में, और फिर भी साले इतिहास में लिखते नहीं है ये लोग. बोलते हैं नहीं वो तो लूट के लेके चला गया. It is a documented fact that after destroying Somnath, Ghazni was deliberately led astray by 2 Hindu soldiers posing as guides, and hundreds of Mahmud's soldiers died of thirst and hunger. उनको मतलब रेगिस्तान के रास्ते से जानबूझकर ऐसे जगह से ले गया कि ये दोनों तो मरे ही थे. ये चीज बाद में पता चला मुझे. ये मरे ही थे, बाकी लोग कैसे मर गए. On his way back, the Chalukya king Bhim was waiting with his army to finish Mahmud, but he took a detour and returned from a different path, avoiding present-day Marwar, where Bhim was waiting. Finally, on his way back, Mahmud's army was decimated by Jats of Sindh. Thus, the Hindus fought for every street, every village, and every temple with these mindless barbarians. It was the spirited defense of Somnath that saved so many temples of our nation. It is mind-boggling. It is mind-boggling that only the destruction of Somnath is rubbed on our wounds constantly, but no one even talks about the thousands of temples saved. Of course, it is a bunch of sex-starved, religiously indoctrinated murderers who will attack a civilized and humane society relentlessly. They are bound to cause some damage, but this was no walkover as propagated by jihadi writers of this nation. For 500 years, Hindus didn't let our soil be polluted by the filth of a totalitarian darkness that engulfed Middle East in a few decades. 500 years of Hindu victories simply erased from the collective consciousness of Hindus also speaks volume of the mediocrity of the post-British Hindu leadership that allowed this to happen. Then came the lie of the Delhi Sultanate. At least 4 recorded instances of the sultans of the Delhi Sultanate have been recorded by independent historians, where the Mewar Maharanas captured and imprisoned these so-called sultans or their children in the Chittor fort. ये कभी भी इतिहास में नहीं मिलता है अपने को. कभी भी इतिहास में नहीं मिलता है. कहीं नहीं मिला. आज तक कहीं नहीं मिला. Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, and Ghiyasuddin Tughlaq were captured and imprisoned by Maharana Hamir Singh, Maharana Lakha, and Maharana Mokal of Mewar, respectively. Mahmud Khilji of Malwa was defeated and imprisoned by Kumbh. Maharana Sangha of Mewar fought close to 100 battles. Maharana Sangha of Mewar fought close to 100 battles in life and won all of these. But what is trumpeted around in our books is only the 100th battle, the Battle of Khanwa against Babur, as a fable of the final defeat of Sangha in Christian era 1527. This is also important.
So many layers of lies have been woven around Khanwa that has become almost impossible to that it has become almost impossible to decipher the truth. We have proved in the chapter on Sangha in this book that Khanwa was a victory for Sangha according to Mewar annals, while conveniently showing the Shaka Johars committed by Rajputs and Hindus of Rajasthan under the while conveniently shoving the Shaka Johars committed by Rajputs and Hindus of Rajasthan under the carpet. The decisive victory of Pratap at Devar finds absolutely no mention in India's post-independence history. Yes. All we hear is the hodgepodge around the Battle of Haldi Ghati and the lies spread around it. It is a mark of the success of the leftist jihadi cabal that Hindu society, because of its intellectual sloth and lack of aggressive scholarliness, has allowed the mutilation of facts around the life and struggles of the greatest Hindu king of medieval India, Maharana Pratap Singh of Mewar. Pratap's son, the mighty Amar Singh, fought 17 battles against the mightiest force around the globe at that time and won all of them. Yet the lie that Rajputs lost all battles continued to be parroted. Maharana Raj Singh defeated Aurangzeb and even captured him twice, but this fact doesn't suit jihadi narrative, and hence Raj Singh himself has been erased from the collective consciousness of Hindus. Like Mewar, the glorious victories of the Jats of Sindh, Lalitaditya, Chandelas, Gurjar Pratihars, and the Vijayanagar Empire, Kakatiyas, Ahoms, Marathas, etc., were also erased, and only the victories of the Islamic invaders trumpeted as some sort of unilateral walkover over Hindu kings. Even a cursory look at the records and annals of each princely state will reveal the truth and demolish this lie of Islamic victory over Hindus. Rajputs put their women to fire. This is the vilest and nastiest allegation put against the singular glory of Rajputs. Johar was an act of supreme sacrifice of Hindu women in refusing to accept Islamic debauchery. Honor was not for barter. That message was vehemently conveyed by Rajput princesses, leading the march to jump into funeral pyres with their children. Can we imagine the impact of this one act on Islamic marauders themselves? While Islam spread into the Middle East and Northern Africa in a matter of decades, no race or people, be it Persians, Byzantines, Egyptians, Mesopotamians, and could even conceive of Johar. These people simply capitulated. Men were killed or converted, and women and children taken as sex slaves. It was only the Rajput women who devised the ultimate tool of Johar to prevent Islam's entry into the Indian subcontinent. Women of all communities of Hindus joined the Rajput ladies in Johar, but it was the resolve of the glorious Rajput foremothers of ours that led the way. In one move, the message that Hindu women, led by Rajput princesses, would burn themselves to ashes instead of becoming their sex slaves was conveyed to the Islamic marauders. Wow. In one move, the singeing skin, shrieking children, rising embers and smoke from the pyres of Johar galvanized the Hindu masses of this nation to never surrender, never yield to subjugation. Hindu women raised the cost of surrender to unimaginable heights by the supreme sacrifice. The parting kisses and hugs of their beloved filled the Hindu men with such fortitude that one Hindu slaughtered 4 Yavans on an average when Saka was to begin. Johar ensured Hindu resistance would go on forever because the ultimate cost of honor and safety had already been paid by the Hindu society. There was no looking back from the ashes of their loved and respected ones for Hindu men. The quantum of a man's attachment to his women folk is immeasurable. It is a deep, pranic bond which surpasses all levels of sensitivities. A man whose mother, daughter, sister, or wife is forced to have sex with an outsider gets reduced to a corpse. He becomes soulless. Such a man might appear to be alive, but within himself he dies 1,000 deaths.
Our glorious foremothers freed their men from this dishonor by giving themselves to the purity of fire. Our mothers burned themselves alive to extinguish all possible of their sexual exploitation by barbarians of the Arabian desert. Hindus fought with a liberated being once they knew the fate of their women. All fear, doubt, and anxiety had evaporated with the embers of Johar. As a society, our confidence was never shattered because we knew our women were not carrying the seeds of these animals. Johar was not a momentary thing. It was a Kaljayi, that is, timeless phenomenon that transcended time. As the mere mention of Johar inspires a resolve in Hindus even today after centuries of its happening, a resolve to fight and resist Islamic expansionism. We can only extrapolate on how Johar was critical for Hindu resistance to Islam in the subcontinent. To give Johar a twist and an angle of Rajput defeat and surrender is definitely a product of an evil mind. To say that Johar implied the inability of Rajputs and Hindu men to protect their women is to spit on the memory of these amazing people. To suggest that Hindu women should have surrendered and lived as sex slaves instead of choosing death by self-immolation amounts to putting our families up for sale at the altar of violence and goonism. Johar was not a case of surrender or forsaking of their women folk by children. Johar was not a case of surrender or forsaking of the women folk and children by Hindu men of Mewar and Rajasthan. It was the resolute defiance to a sex-obsessed invader when Hindu women chose honor above life. Which people on this globe prefer death to barter their freedom to a barbaric invader? Except for the Hindus, which people would devise this unique form of denial to their body and spirit to an invader who was unrelenting in his attacks? Except for the Hindus, which people would deny the Islamic barbarians the joy of touching even their dead bodies by burning themselves alive? Except the Hindus, to mock this kind of supreme sacrifice of life at the altar of freedom and honor as a meek surrender of Rajputs is to belittle this amazing feat of Hindus as a defeatist step, is an adharmic understanding of life and deserves to be rejected vehemently. Johar was a terrific expression of love, expression of unfathomable love for one's spouse, dharma, and nation. Out of this love, the Hindu women chose to immolate themselves than to sleep with the murderers of their husbands, brothers, and sons. In this labor of love, our great foremothers walked this path to protect that their satitva, their freedom, and their honor. Hindus should preserve the memory of these great ancestors with pride and gratitude so that we too can raise ourselves to these highest ideals of human existence. दादा एक मिनट रुक जाओ, दादा रुक जाओ। अभी ये जो आपने पढ़ा है ये कितना मतलब शरीर के रोए खड़े कर देता है। और जो ये लिखते हैं कि हाँ इन लोगों ने मीकली सरेंडर किया था और अपनी महिलाओं को, स्त्रियों को और बच्चों को जलने पे मजबूर कर दिया था, मैं उनके मतलब थॉट प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ कि क्या इन लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने देश की इज्जत बचाने के लिए कि भाई ठीक है, ये लोग तो मरने बाद भी औरतों को नहीं छोड़ते थे। तो अगर उन्होंने अपने शरीर का नाश कर दिया और जो आदमी लोग थे उन्होंने अपना पूरा रेड सैफ्रॉन बांध करके और लड़ गए, मर गए, उनको मालूम था कि भाई ठीक है अब मेरे पीछे ना तो मेरे कोई बच्चा है, ना मेरी कोई बीबी है, कोई देखने वाला नहीं है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी सुप्रीम सैक्रिफाइस। लेकिन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हैं लोग, मतलब क्या दिमाग में इनके है? ये चाहते थे कि मतलब सेक्स स्लेव्स बने सब, तब इनका पेट भरता। ये जो है गंदे दिमाग के लोग हैं, गंदी सोच है, घिनौनी। ये जो कम्युनिस्ट ये सारा किसी के नहीं होते, अपने बाप के नहीं होते, अपनी माँ के नहीं होते। सारा किया धरा ये कम्युनिस्ट कुत्तों का है। और ये जो एक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आया था, पहला शिक्षा मंत्री, जिहादी शिक्षा मंत्री आया था, और नेहरू, ये लुल्ल पटाखा नेहरू
लहरा दिया पूरे हिंदुस्तान को गलत हिस्ट्री पढ़ा के। आइडियोलॉजिकल संवर्जन किया है हम लोगों का पूरा। अब दूसरा आरोप देखिए, इन्होंने राजपूतों का इतिहास लिख करके राजपूतों का इतना सत्यानाश किया है कि मतलब अभी तो फिर भी राजपूत अपने आप को राजपूत बोलता है, लेकिन बीच में तो ऐसा हो गया था कि नहीं, राजपूत तो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम थे और मुसलमानों से मुगलों के गुलाम थे। हाँ, मुगलों के गुलाम थे, यही मतलब कहानी जो है चारों तरफ फैलाया जाता था कि मुगलों के गुलाम थे वो। क्या नाटक करके रखा है इन लोगों ने। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि अवगढ़ आप जैसे और प्रदीप, आप लोग अपने बच्चों को कम से कम घर में तो पूरी इतिहास ये किताब पढ़वा दो उनको कि भाई क्या होता है यार। रियली भगवान न करे कभी इस तरह कुछ हो, सिविल वार अगर होगा, सबसे पहले मैं सेकुलरों को, कम्युनिस्ट कुत्तों को निपटाऊंगा, बाद में जिहादियों से लड़ूंगा, सबसे पहले इन लोगों को पीछे फील्डिंग लगाऊंगा। नहीं, आजकल भी अगर आसपास में कोई दिखता हो ना तो तुम्हारे पास तो बहुत तरीके हैं ना। फतेहपुर में तो 500 रुपए भी मर्डर हो जाता है, किसी को दे दो, भैंसे दारू पिला दो, बोला जाकर मार दे मादर चो, तो देखा जाएगा क्या होता है। उनकी तो ऐसी उनको जीने देने का नहीं। सेकुलर टाइप को जो मुझे मिलता है ना, तो उससे मैं फिर गाली से बात करता हूँ, तुरंत मेरी बात करने की टोन चेंज हो जाती है। सेकुलरों से तो इतनी चिढ़ है मुझे कि इन मादर चोदों को कोई भरोसा नहीं कि अपनी माँ को दे दें कि बहन को दे दें, किसको दे दें, कभी भरोसा नहीं किया जाता। कल प्रदीप को कोई अड़ुआ मिला था वहां पर गुड़गांव साइड में कहीं पर, वो भी कम्युनिस्ट था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ऐसे भी लोगों को तो यार, हिंदुस्तान खाना खाते हो तुम्हारे मुंह से निकलता है कैसे ये चीज। अब ये देखिए आरोप जो है संवर्जन हो चुका है लोग। चल आगे बढ़ते हैं, चले। हाँ, तो ये आरोप देखिए, राजपूत्स वर ओपियम एडिक्ट्स एंड ड्रंकर्ड्स। क्या मतलब है यार? मतलब अफीम खाते थे और दारू पीते थे। दारू पीते थे, कोई बात होती है? अब देखिए क्या लिखा जा रहा है। नथिंग कैन बी मोर डिमीनिंग देन दिस एलिगेशन ऑन द ग्लोरियस राजपूत्स ऑफ राजस्थान। Firstly, let us imagine a Jaimal made here, or Patta Chunawat, or even an ordinary Rajput fighter preparing to set a funeral pyre of his beloved, his children and his mother. What sends a chill down our spine on mere contemplation was actually done physically by thousands of Hindus led by Rajputs when Saka Jawars were committed. For a few moments, can we transpose our consciousness to that moment when Rajput men would light the pyres of their families and then witness them being burnt alive in front of their eyes? Even the most stone-hearted man cannot undergo this ordeal without losing his mind. The Rajput gave anal to each other in betel leaves as a mark of the parting gift before opening the gates of their forts and setting out for their last stand against the barbarians. Opium was used by warriors to numb themselves physically and psychologically. जो मैं बोल रहा था सर वही, opium was used by warriors to numb themselves physically and psychologically when confronted by a foe who would stop at nothing short of total annihilation of their families and dharma. Nowhere in Britain history do we find any example. एक मिनट दादा ये ओपियम तो ये लेके आए थे ना, ये अफगानी शेरशाह सूरी लोग ये लेके आए थे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान। नहीं, उस समय ये इसको अलग तरीके से मत जोड़ो। अफगानिस्तान में जब काबुल कंधार में जब हमारे दुर्योधन और की मम्मी हुआ करती थी, उस समय भी वहां पे ओपियम होता था। ओपियम वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन। इस समय ये मतलब लड़ाई आज भी यूज होता है मेडिसिन आज भी। हाँ, तो वो उसको नशे के तौर पे, जिससे कि ज्यादा उसका मतलब एल्कोलाइड है ना, वो अभी भी तो हम लोग एल्कोलाइड यूज करते हैं ना नशे को, जो भी दर्द होता है उसको वो करने के लिए। अब उस समय तो पेनिसिलिन थी नहीं, एंटीबायोटिक था नहीं, तो उसी से वो लोग इलाज करते थे। तो ये मत बोलो कि हाँ ये अफगानी लेकर के आए थे। ओपियम वहां पर मतलब जमाने से, जब से धरती है तब से वहां पैदा होता है, और दैट वाज कंसीडर्ड एज अ ड्रग फॉर द पीपल हु वर इंजर्ड इन आर्मी। अभी अवगढ़ अपने घर में पूछता है अपने बाबा से, तो उनके जमाने में बच्चों को सुबेरे सुबेरे मम्मी जाड़े के दिनों में तेल वेल से खूब मालिश वालिश करके और थोड़ा सा घुट्टी के साथ में ओपियम पिला देती थी और वो सो जाता था। उसके बाद भी घर में वो काम करती रहती थी, 4 से 5 घंटे बच्चा रहता था।
वो परदादी करती थी, ये पापा लोग को हाँ, पिला देती थी परदादी। अरे हमें भी पिलाया है, हमें भी पिलाया। हम तो अम्मा को बोलते थे हमने अफीमची बना दिया था, आपने हमको अफीम पिला के सुला देते थे। बोलते उस समय तो यही था ना कि क्या करेंगे, ज्यादा रोगे, ज्यादा अगर आपको कहीं पर सिर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है तो ठीक है वो कर दो। अभी आज की डेट में लोग बाग गाँव में जो भांग खाते हैं शाम के टाइम में, वो क्यों खाते हैं? जस्ट टू फॉरगेट, दिन भर का जो मेहनत करके बैठे होते हैं उसको खत्म करने के लिए कि चलो ठीक है भांग वांग खा लिया, खाना आराम से खा लिया, नींद तो आएगी शांति से। ये nowhere in Britain history do we find any example of opium consumption, otherwise a social evil, when warriors would en masse consume morphine without compromising their consciousness and conduct. Correct. The second reason for opium consumption in warriors of Rajasthan was the analgesic effect of morphine. Yes, Almost, जो आप बता रहे थे अभी, almost all Hindu warriors suffered major and minor injuries during countless conflicts with Mlechs, and even during training for combat and horse riding. The great Maharana Sangha had no less than दादा डॉक्टर रत्नो खुद डॉक्टर है, एमबीबीएस है, सो ही नोज ओपियम का क्या है क्या नहीं, इसलिए उन्होंने मॉर्फिन लिखा है। नहीं, कम मात्रा में अभी भी दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। The great Maharana Sangha had no less than 84 wounds on his body as a consequence of more than 100 battles he fought around Mewar. Many warriors had amputated fingers and limbs, which resulted in phantom limbs pains to these warriors. Phantom limb pain मतलब जो कट भी गया ना, वहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता, लगता है कि हाथ का एक्सटेंशन है, जो कटा हुआ हिस्सा वो भी पेन, मतलब नर्व का इतना ज्यादा शूट करता है पेन उस जगह, लगता है कि हाथ है लेकिन मतलब कटा हुआ है, फिर भी लगता है कि एम्प्यूटेटेड जगह जो है बहुत पेनफुल एक सिचुएशन आती है। Opium was the only respite for these traumatized soldiers. Opium's use was purely medicinal or celebratory in marriages in Rajasthan, and to castigate such an innocuous practice as addiction and to mock the practice is not only insensitive but downright evil in all its designs and implications. बता एक मिनट, जसवंत सिंह ने जोधपुर में, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका कोई शादी वादी हुआ था, वहां पर उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था। सारे पत्रकार कितने हराम होते हैं, खाना खाया, दारू पिया और बाद में बोल दिया कि उनका जो, जब वो मैरिज सेरेमनी चल रही थी उन लोगों ने अफीम पी रहे थे, वो अखबार में छापा था इन लोग। अरे वो राजघराने की वो मतलब रिवायत है, कस्टम से वो लोग अफीम को उसमें रख देते हैं हुक्के के ऊपर और थोड़ा सा आग रख देते हैं, उसके बाद में उसको पीते हैं। तो कुछ भी अगर मैं तो वही बोलता हूँ, ये पाप है। पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पर आया है, जो अपने आप को जय भारती की भाषा में शरणार्थी बोलता है, मैं तो शरणार्थी नहीं बोलता, मैं तो ये बोलता भाई तो आप हिंदुस्तान थे, आपको मतलब वहां से अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आप लोग यहाँ पे चले आए हो, मैं शरणार्थी कभी नहीं बोलता। दूसरे लोग जो हैं यहाँ पर सबको नीचा दिखाने का ठेका ले रखा है इन बेवकूफों ने यार। अब वो गधा जो प्रधानमंत्री बनने वाला है, बेवकूफ, अपने सिर पर पहिए वाला सूटकेस लेकर के वो कुली बन रहा है। बताओ, अरे पहिए वाला सूटकेस लेकर कोई कुली बन, उसको कुली को देगा कि तू चला इसको, साइकिल बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है, धान लगा रहा है। अरे राहुल गांधी को तो नहीं, वो ट्रेनिंग ले रहा है ना, यही सब काम करेगा बाद में वो। इस नौटंकी के साथ में अगर तुम उसको दिखाओगे तो क्या हिंदुस्तान की जनता इतनी, मतलब मैं सही बोलना नहीं चाहिए, इतनी हिंदुस्तान की जनता इतनी क्यों है क्या कि वो तुम्हारे को वोट दे देगी? नहीं, इनके बाहर के पैसे यदि फ्रीज हो जाए ना तो ये सड़क पे आ जाएंगे, तो इसीलिए तैयारी उसी का। बाहर जो हटा कर इस आदमी ने एक दिन भी कहीं पर जाके नौकरी की, हम लोग सलाह करते हैं किसी की, अरे उससे होगा नहीं सर, नौकरी क्या करेगा ये सब कुछ नहीं होने वाला। किसने दिया है? रोज तो जाकर कहीं 5 स्टार में रुकता है, कहीं रुकता है, उसको अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और होटलों में ठहराया जाता है, इधर ठहरा, जब आता है तो बैंकॉक चला जाता है मालिश करवाने के लिए,
जब मर्जी आई तो लंदन चला जाता है बकवास करने के लिए। करेक्ट, इनका कोई वो नहीं करते, कौन फंड कर रहा है इनको? नहीं दादा, वो बैंकॉक जाता है चिंतन करने, वहां पे डाला था जब गया था बैंकॉक, तो उसमें ट्विटर में लिखा था चिंतन करने गए, तो दूसरा लिखता है नीचे, भैया बैंकॉक मैं भी गया था, बैंकॉक में सब कुछ हो सकता है, बस चिंतने नहीं हो सकता। ऐसी जगह है बैंकॉक, वहां चिंतन करने गए। लास्ट संडे को जय भाटी साहब, लास्ट संडे को मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वो थाई रेस्टोरेंट था, तो वहां पर एक या दो मेल थे जो सर्व करने वाले थे, बाकी सबकी सब लेडीज थी, बहुत चिकनी चिकनी थी। मैंने अपने दामाद से बोला, मैंने कहा इतनी चिकनी होती है ये? थाईलैंड की थी वो सारी की सारी। बोलता हाँ ये तो हमेशा मांस मच्छी खाती रहती है, क्या ग्लेजिंग स्किन थी इनकी। तो राहुल का तो मन मतलब भटकेगा इनको देख करके, जा करके वहां पर पता नहीं फुकेट में क्या करने जाता है ये लोग। चलो ठीक है। एक और इल्जाम, Rajputs kept fighting each other. हाँ, That Hindus didn't fight Islamists unitedly is another hideous lie that has been peddled by Hindus and Hindu sympathizers themselves. On a closer look, this is all not only erroneous but also demonstrate a gross lack of scholarliness on behalf of Hindu intelligentsia. The most maligned people on this issue are the Rajputs of Jaipur, and the writer has dealt with this issue in detail in another chapter. Hindu Dharma is presently engaged in an existential civilizational conflict with the two expansive Abrahamic faiths, which leave no opportunity to malign Hinduism and are converting Hindus on an industrial scale. Let's briefly talk about the sects within the two faiths and the consequences of the incessant war between these sects. While Muslims have dozens of sects, Christians have hundreds of them. Christians have two major sects, namely Catholic and Protestants. Catholics consider the Pope sitting in Rome as supreme, while Protestants don't. Millions following both the sects have slain and harassed each other for centuries. Crores of Christians killed each other in the Second World War from 1939 to 1945 for one madman's lust for power and dominance. Similarly, Muslims have various sects who even call each other infidel, but majorly, Shia and Sunni conflict has gulped millions of human lives as recently as the Iran-Iraq war. तो ये ईरान-इराक वॉर भी तो यूएस का ही करा है। 18 साल चला था वो, तो ठीक है ना, तो ईरान को वीक करने के लिए किया था उन्होंने। हाँ, तो ये शिया सुन्नी के चलते ना उनको मौका वहीं मिला, फॉल्ट लाइन वहीं मिली ना। ईरान इराक से याद आया कि आज इजराइल का देखा कि नहीं, वो तो माले गनीमत बना के घूम रहे हैं, लड़कियों को घुस गए हैं सब, 2-2.5 हजार घुसे हैं तादाद में, और इजरायली औरतों को माले गनीमत बना के घूम रहे हैं। वीडियो आए हैं भाई बहुत सारे, मैंने लिंक डाला है दादा, ये प्राइवेट में पड़ा है। अच्छा अच्छा, चाहे तो देख सकते हैं, ये दिखा दीजिए लाइव। बाद में देखेंगे, बाद में वो कंटेंट बदल जाएगा। ये क्या राष्ट्र रक्षक, ये कोई मतलब कहीं ये क्या बोलूं, प्लाक, मार्बल प्लाक होता है ना, वो लगा है। अच्छा, महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा पहुंचे। राणा की सेना में राजा हसन खान भारमल, इधर वीरम देव, रतन सिंह मेडला, मेहंदी राय चंदेरी, राव गंगा मारवाड़, रावल उदय सिंह डूंगरपुर, रावत रतन सिंह चुड़ावत, सलम्बुर, नरवद हाड़ा और वीर सिंह बूंदी, रावत जोगा, कन्नौड़, पृथ्वीराज आमेर, चंद्रभान चौहान, मैनपुरी, ब्ला 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 करके क्या हुआ, कुंबर बीकानेर, शत्रुदेव गांगरन, मोहम्मद लोधी, राजा ब्रह्मदेव राय, दिलीप राव आदि अपनी सेना लेकर के, अच्छा सबके सब इकट्ठा थे। मतलब ये कहना चाह रहा कि ये जो हिंदू बोले कि अलग अलग लड़ रहे थे, उनके बारे में होता है सबको इकट्ठा करके लड़ते, ये खैर बनाओ। ओके। More than 5 lakh Muslims have been killed in Shia-Sunni conflicts in Syria in the last 10 years. In stark contrast, Hindus never killed each other for a variance of beliefs in thousands of years of their existence. When even two
blood brothers find it difficult to coexist. Expecting 100 crore Hindus to live without frictions is not only utopian but counterproductive to the ethos of a nation. Let 1,000 ideas bloom, but violence can never be a citizen's right. The power to unleash violence must only rest with the state. Hindus have followed this ideal when our Abrahamic friends were living in caves. In spite of all the differences of language, regions, food habits, ethnicities, etc., crores of Hindus live together as a Hindu Rashtra. There is dissonance, but through debate and discussions, elections and constructive criticism, society deals with them and stays functional. 100 crore Hindus can't be a monolith of ideas and practices. Still, Sanatan Dharma provides humanity with a peaceful and progressive model, hence Hinduism should be saved at any cost. The leftists and pseudo-liberal intellectuals should not preach Hindus on tolerance and coexistence. Hindus have never slaughtered each other over imaginary beliefs and spurious principles. Our glorious forefathers knew very well that we had to be united in order to oppose the Islamic marauders. Suffice it to say here that power struggle is a game played in all societies ruthlessly, and since the Rajputs were the ruling class in most of the northern and western parts of the subcontinent, there were numerous rivalries amongst the various Rajput houses passed on from generation to generation. One of the most important battles of medieval India was fought between Maharana Sangha and Babur in Khanwa in Christian era 1527. All Rajputs of Rajasthan and central India fought together in that bloody battle that lasted a full day. In spite of all dirty tactics used by Babur, Hindus managed to defeat Babur's army because wave after wave, Rajputs kept fighting the reverses and dying valiantly to defeat the Mughal. Some battles were lost to Islamists because the latter always hit below the belt, while Hindus kept fighting with a moral code of warriors. We get innumerable examples of Hindu kings capturing the Islamic rulers and setting them free after extracting heavy penalties. Muslims never did this with Hindu kings though. Raja Dahir, Prithviraj Chauhan, Raja Hemchandra were beheaded by Qasim Ghori and Akbar respectively. While the women and families of Islamic kings were never even touched by Hindu kings had to send the women and family in safety to faraway places. This was not only bothersome, but needed diversion of already depleted numbers of the army for the same. Hindus did not know how to respond to the unchivalrous tactics of the barbarians and were cheated. How many times were cows or oxen used by Islamists to blunt an offensive by Hindus? Since these animals are sacred to the Hindus, Hindus were facing a very uneven conflict with an army of rapists and murderers with absent moral compass and simply did not have that hatred for the enemies needed to destroy them. But to say that Hindus were never united in their opposition to Islamic imperialists is a white lie created to devalue the glorious resistance of Hindus. How did we manage to defeat the so-called Delhi Sultanate rulers consistently for 300 years if we were not united? Bappa Rawal formed a Hindu confederation against Arab invaders with the Gurjar Pratihars and Parmars and conclusively pushed the Arabs back to Iran, and this Hindu federation kept the Arabs at bay for the next 500 years. If we look at the names of the Rajputs who were fighting for Mewar, we see Rathods, Chauhans, Parmars, Tomars, Kachawas, Solankis, etc. aligning with Mewar and each other to take on the Mlech. All the subcastes of Rajputs hailed from different principalities of northern and western India. Though the Sisodiyas were the rulers of Mewar, all Rajputs like Rathods, Jhalars, Chauhans, Hadas, Kachawas, Khichis, Songadas, Gaurs, Padihars, etc. joined the Sisodiyas to fight the invader from the desert. The union of Rajputs was premised on a collective understanding that only a united Hindu response could stall the march of the predators from the west.
unlike the soldiers of Islam, who were united only because they had been assured a share in the loot of Hindu wealth and Hindu women. At Haldi Ghati, the chief of cavalry of Pratap was a Brahmin named Puna Joshi. The great Bhama Shah was an Oswal Jain. Bhils were a separate contingent under their king Rana Punj. All Jatis stood by Pratap in fighting the invader of Mewar. It was an alliance of Dharmiks against the Brotherhood of Bandits. The most glaring example of the Dharmik alliance was the treaty between the Sisodiyas of Mewar and the Rathods of Marwar, when both major clans came together to defend the Srinathji temple at Sihar in the present-day Nathwada. Aurangzeb was comprehensively defeated by the alliance in Christian era 1679 to 80 and had to run to Ajmer to save himself from the wrath of Rajputs. To say that Hindus, particularly Rajputs, were never united in their wars is not only erroneous but mischievous in design. And the design is to demean and belittle the supreme sacrifices of Hindus in stymieing the cruelest war machine mankind has ever known. Of course, the Rajputs were not monoliths of a particular clan when they fought the Islamic zealots, but like anywhere else, there were conflicting interests in the succession to a throne or rival claims on territories. But faced by a common enemy, Rajputs in particular and Hindus in general put up a united front against Islamists and succeeded in defeating them. All 36 castes of Hindus like Bhils, Minas, Gurjars, Raigars, Valmikis, Brahmins, Charans, Jats, Yadavs, and many more like them kept fighting the Islamic imperialists. Every single war of succession within Islamic rulers happened with a bloodbath amongst brothers and parents. But the propaganda is that Hindus fought each other. To say that Hindus, especially Rajputs, were not united in fighting Muslim invaders is not only erroneous but mischievous too. Leftists, jihadi historians have spread this canard to humiliate and belittle the sacrifices and struggle of Hindus against the cruelest invaders mankind has ever known. It is up to the Hindus of this globe to break out of this deathly spell cast upon us by the leftists. The warriors of Bharatvarsh, especially Rajputs, were the bravest, most intelligent, and utterly selfless people, unmindful of the pleasures and pains of sensual pleasures, fixed in titiksh, indifference to sensual inputs. These lions kept fighting Islamists ceaselessly. Our freedom, our opulence, our very existence is a blessing of these Mahapurushas. Wow. अच्छा, ये भी एक है. When you can't beat them, mock them, divide them. And this is, हाँ, पढ़ेंगे सर आप? पढ़ता हूँ जी सर. मिनट. प्रेम जी कहाँ हैं? प्रेम जी बाहर बैठे हुए हैं. पता नहीं प्रेम जी क्या बात. कौन है नीचे? कौन है ये? हुई जी. अच्छा, ये अपने प्रोफेसर साहब आ गए. जय श्री राम जी. जय श्री राम. हर हर महादेव. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय बजरंग बली. जय बजरंग. सीताराम दादा. सीताराम. सीताराम. जी सर. आज्ञा है तो पढ़ा जाए आगे. सर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो आप पढ़ें सर, कोई प्रॉब्लम. मैं पढ़ता हूँ ना. मैं आज्ञा ले रहा हूँ भाई. आप लोग जयराम और अरे आज्ञा क्या लीजिएगा, आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, राम जोहार चल रही है ना, वो कर लो ना पूरा पूरा, फिर चलते हैं आगे. ठीक है. अच्छा, ये हेडिंग देखिए सर. व्हेन यू कांट बीट देम, मॉक देम, डिवाइड देम. ये तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ये दे आर इंडल्जिंग इन दिस, और हिंदुओं को बांटने के लिए. आज की डेट में इटालियन माता और इटालियन पुत्र तो कर रहे हैं, और उनके चमचे वही कर रहे हैं ना आज की डेट में. बिल्कुल सर, बिल्कुल. When you can't beat them, mock them, divide them. अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उनके खिल्ली उड़ाओ और उनको अलग कर दो, बांट दो. ये
ये इनका स्ट्रेटजी है। हमारे जो डिस्टोरियन है, जो हिस्टोरियंस है और लेफ्टिस्ट जिहादीज है, उनका ये है। It is not that the leftists and the others are totally unaware of the valor and sacrifices of the martial communities of Hindus. In fact, they are more aware and alarmed by the fighters of Hinduism and Hindu themselves. Surely, the pseudo-liberal cabal of our nation saw the resolve of Hindus to fight for their dharma till the last bullet and the last man. And they decided to weaken Hindus from within by alienating the martial communities from mainstream Hinduism, besides erasing the glorious saga of its muscular resistance to Islam and inventing white lies around the valor of Muslims. They used a very potent weapon to demoralize our martial communities, mockery. Gullible Hindus themselves participated in this exercise, demanding the sacrifices of our fighter. The most obvious community to bear the brunt of this mockery is our Sikhs, Sahodars. प्रेम जी अंदर आओ। But this trick has been used as Jat, Gujjar, and Rajput to ridicule them for the very trait that was their crowning glory. Have we Hindus ever paused for a moment to realize as to what impact would it have on a Sikh child to be the butt of all jokes in his class just for wearing kesh, pagdi, and kada? तो और भी एक होता था ना, तो 12 बज्जू समथिंग लाइक बोलते थे। वी हैव बिकम सो डिप्लीटेड इन आवर कंगा है, कंगा है, कृपान है, 5 चीज ना। हाँ, लेकिन वो वही बोल रहे थे, 3 बताया गया। वो इन्होंने पूरा लिखा नहीं है, बट 5 चीजें हैं। कंगा है, कोम्ब, कंगा और कृपाण। अच्छा, उसमें क्या बोलते हैं, ये केस जो है, केस और पगड़ी, कड़ा, इन्होंने ऊपर से शुरू किया है और नीचे नहीं गए, ऐसा लगता है। कंगा और कृपाण में नहीं गए। ओके, वी हैव बिकम सो डिप्लीटेड इन आवर intellect bordering cruelty that we Hindus as a society have participated in the bullying of our own Sikh children. Do we ever pause and ponder over the trauma we cause to a child when we mock his identity incessantly? Jat jokes and Rajput jokes have similarly found a place in the colloquial discourse, and we don't even realize how we are damaging the psyche of our own people. Mockery is a very evil thing, but more evil is if a child has to face it. During the time of Aurangzeb and up to the reign of Maharaja Ranjit Singh, Punjab was a playground of bitter rivalry between Muslims on one side and Hindu Sikhs on the other. Muslims are known to take away women and children of Hindus and Sikhs to be used as sex slaves or barter them for gold. At 12 o'clock midnight, when the enemy camp was in deep sleep, the Sikh group would make a surprise attack on the campus where the women and children are being kept in chains. How we ourselves have maligned this glorious tradition of Sikh by weaving jokes around it and mocking our Sikhs severe as the gong has struck 12. They have gone bonkers. So बोलते हैं ना 12 बज गए, सरदार पागल हो गया, ऐसा करके बोलते रहते हैं लोग। Can ये मुसलमानों का बनाया हुआ जोक है? Can there be a bigger example of a stupidity? A tradition that should have been cherished is reduced to this level. Similarly, Rajputs and Jats are marked for being unsmart in chivalry. The conduct of the rich and educated Hindus towards our Dalit Sahodars have been no less demeaning. When did the unfortunate day dawn that we started calling our own brothers and sisters in faith as untouchable? Achut bolte the अच्छा. We have not been bothered to inquire about the roots of our Dalit Sahodars. Two stories are being shared to highlight the greatness of our Dalit ancestors and our stupidity of belittling them. Khatik, who are Hindu butchers, are supposed to trace their origin in Brahmins who used to do animal sacrifice in temples. The identification of Brahman with animal sacrifice and meat eating led to gradual drifting away of these Brahmins from the mainstream Hinduism, and thus Khatiks became an entirely new Jat. The Khatiks fought the Islamist
throughout their existence and continue to do so even today. Second case is Valmiki. They are believed to be Kshatriyas who were forced to do menial jobs by Muslim rulers, and out of shame, they broke their sacred Janeus. An act of such supreme sacrifice by our glorious ancestors should have been honored, but unfortunately, we forget them. It must also be noted that it was our Valmiki ancestor who started raising pigs and consume pork in daily life to keep away Muslim invader. अरे बाप रे, ये क्या है? Is it correct? Wow. Comment please. कोई बोल नहीं रहा है, चलो. A Muslim fears and hate nothing more. A Muslim fears and hate nothing. हाँ, मैं म्यूट कर रहा. पहले जो पढ़ा वो जो खटी के बारे में बोला, दैट इज द न्यूज कि अगर वो ब्राह्मण थे और दे वर आउटकास्टेड. अब इस पे आते हैं कि सूरों की मतलब आपने वो कर दी, क्या कहते हैं, फार्मिंग. वो तो पालते हैं, सुअर पालते हैं. देखो दादा, हमारी हिंदुओं की क्या कमी रही है, और आप जरा ना एक एनालिटिकल एनालिसिस करें कि क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट वर्सेस हिंदू. हम लोग स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए. इंडिया को पूरा का पूरा जो एक इस्लामिक अनफिनिश्ड एजेंडा है, मौलाना आजाद, नेहरू जितने हैं, कि चाहे इसको 10 साल लगे या 100 साल लगे, ये जो भारतवर्ष है इसको पूरा का पूरा इस्लामाइजेशन कैसे करना है उसकी नींव रख है. हम हिंदूज हैं बड़ी टैक्टिकल थिंकर कि अभी 2 रुपए का फायदा जहां होता है या कुछ हो जाए बस. हम स्ट्रेटेजिक थिंकर जो है मेजॉरिटी नहीं है. हमको इनसे ये देखना चाहिए कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों है. वाई वी आर लूजिंग ग्राउंड, वाई वी आर लूजिंग पीपल, वाई वी आर लूजिंग लैंड. कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म है, टैक्टिकल है. बस अभी का जुगाड़ हो जाए तो ये और ये एक मजार है. मैं भी जरा रोककर 5-10 रुपए चढ़ाकर और अपना जरा माथा टेक कुछ फायदा हो जाए. ये हमारा हाल है. जय भारती साहब, इनका लॉजिक ये है कि जो खटिक कम्युनिटी है, दे वर क्षत्रिय, सब ब्राह्मण्स, और सिंस दे वर सैक्रिफाइसिंग, मंदिर में वो लोग सैक्रिफाइस करते थे एनिमल को, तो इसको धीरे धीरे करके इन लोगों ने अलग से कास्ट बना दिया खटी का. वाल्मीकि के बारे में बोलते हैं कि ये जो मुसलमान लोग हैं उनसे वो मिनियल काम करवाते थे, तो देवर क्षत्रिय, जो मतलब उनको पकड़ करके जिनको रखते होंगे उनसे मिनियल काम करवाते होंगे, और उन लोगों ने अपना जनेऊ उन्हें तोड़ दिया था. अब फिर बाद में बोलता है कि उन लोगों ने मुसलमानों को दूर रखने के लिए पिग पालना शुरू कर दिया था, और मतलब जो पिग का जो गोश्त है उसको खाना शुरू कर दिया था. तो ये मेरे ख्याल में ये रत्नू साहब ने शायद राजस्थान से कहीं से पढ़ा होगा इस चीज को. नहीं, ये सुअर खाने से या सुअर पालने से धर्म परिवर्तन में भी थोड़ा सा ये रुकावट आएगी ना. हाँ, they will not force them to convert into Islam ना, ऐसा भी होगा ना. अरे दादा, मेरी एक बात सुनो, मेरे को आप सब बताओ. इनमें से एक निखिल जी ब्राह्मण है, एक मैं ब्राह्मण हूँ, और कौन है यहाँ पे ब्राह्मण? दादा आप ब्राह्मण है, ठीक है. अरे आप सोचो कि कई बार अगर जमीन बंजर हो गई, आप खेती उगा नहीं सके, कोई सब्जियां फल नहीं है, अरे खाओगे क्या? अगर जानवर सामने है तो खाओगे ना उसको, या भूखे मर जाओगे? प्रेम जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक करो दीदी, तो फिर दोबारा आओ, क्योंकि अभी भी वो देखो. तो ये जो हवा बना दिया है कि ब्राह्मण आप मीट नहीं खाना और ये नहीं करना वो नहीं करना,
कोई प्रैक्टिकल चीज भी है कि नहीं? मैंने ये बात अपने भाई साहब से, जब मैं अभी था, अभी 2-2.5 महीने बीमार थे, मैंने फिलोसॉफिकल बातें हो रही थी। मैंने कहा दादा सोचो, कभी जमीन ऐसी हो जाए कि वहां पर अनाज उगाना, सब्जी उगाना बहुत मुश्किल हो जाए, कम हो जाए, और जानवर हैं ज्यादा, खाओगे कि नहीं खाओगे? है ना? कई बार दादा जो ये हाँ, बोलो खटीक अफगन। होते हैं ना, खटीक होते हमारे हैं ना, यहाँ तो ये लोग खाते ही हैं सर, हमारे यहाँ तो खाते हैं, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि बंगाल के जो ब्राह्मण हैं वो मतलब कुछ नहीं है, वो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो बोला ही जाता है। मतलब दादा सारे ब्राह्मण जो है ढकोसले काम करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, ठगो, और मीट ना खाओ तो आप ब्राह्मण हो। हाँ, दादा इनका सारे जो अच्छे कोंकण काम के जो करो। ब्राह्मण होते हैं, क्या जो दादा? कोंकण के ब्राह्मण होते हैं वो भी तो मच्छी खाते हैं। जी जी, अरे दादा एक बात सुनो, मेरी जय भारती सर, सही ancestry बोल रहे हो आप। जी जी जी, पेशावर की है। मेरे जो फादर के साइड से हैं वो सारे के सारे वेजिटेरियन, लेकिन जो मेरी माँ की साइड के है बड़े जबरदस्त हैवी मीट ईटर है। मेरी मदर शादी से पहले सारे घर में मीट खाते थे। मेरी माँ कहती है कि तेरी नानी बहुत अच्छा मीट बनाया करती थी। तो हमारी माता जी की आज जब विवाह हुआ, हमारे पिताजी से घर में आए, उन्होंने खाना छोड़ दिया क्योंकि भाई ये था। अब ऐसा क्या होगा कि वो ब्राह्मण नहीं थे? नहीं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट यू डिसाइड द कास्ट ऑफ समबडी, ये क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्षत्रिय भी तो खाते हैं मीट वगैरह, वो भी तो। थोड़ा आगे चलते हैं। अरे बाप रे, प्रेम जी प्रेम जी आप को मना थोड़ा करो सा भाई, मतलब प्रेम जी, दोबारा जुड़े प्रेम जी प्रेम जी। नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। प्रेम जी साहब आप डायरेक्टली बात करो ना, कोई जो ईयरफोन और फोन लगा रखा उसको छोड़ दो। आगे चलो, जी 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 सर। आगे है, आगे चलते हैं, चलो। It must be also noted that it was our Valmiki ancestor who started raising pigs and consumed pig pork in daily life to keep away Muslim invaders. A Muslim fears and hate nothing more than a pig or anything remotely related to pig. Pig farming was such an innovative and effective means of keeping away Muslim invaders that we can only look back on our ancestors with awe and respect. But with passage of time, all these sacrifices of our great ancestors were forgotten. Our own brothers were pushed down the social ladder physically and economically. No community on this earth is as ungrateful as Hindus in actively contributing in instilling a massive inferiority complex in our martial calm. The results are there for all to see. People respond differently to insult. Most will internalize it and move on. Some will rebel, others will resort to alcohol like the Rajputs and our Dalit Sahodars. A vast number will go into the victimhood mode. Victimhood is the worst state of mind. A victim always blames other for his plight and justify every wrongdoing on the basis of some injustice of the past. Victimhood is the अच्छा जैसे हमारे ये भिमटे करते हैं, victimhood is the root of all evil in this earth. It is because we Hindus have never introspected about the psychological impact of mockery and arrogance that we are at loss to understand why our martial communities are a pale shadow of what their ancestors were. Many Sikhs have either given up Sikh tradition or becoming belligerent, engulfed in a deep hatred for non-Sikh Hindus. Rajputs have completely internalized and are missing from action on the national regional stages or even as a caste group. Many Rajput boys have become rowdy students in universities and almost the entire community is in disarray. The Gurjars and the Jats who fought the Islamic murderers even without organizing leadership had been denied their proper due to in this beautiful saga of Hindu resistance. The Dalit Sahodars have taken to alcohol and victimhood narrative. It was a leftist jihadi plot that should never have been yielded by Hindu intelligentsia and leadership.
It has damaged us immensely, but now the time has come to immediately halt this self-damage of mocking our own defense system of some very amazing and valiant people. Nearby 4 to 5 crore Rajputs cannot be allowed to simply drift away from the Hindu masses due to leftist propaganda. A people who gave up everything to protect us from a gang of rapists and predators. Similarly, crores of Jat, Gurjars, Sikhs, our Dalit Sahodras, Yadav, Kurmis, Bhils, and dozens of Hindu Jatis who kept fighting for Dharma need to be honored and cherished for the sacrifices of their valorous ancestors. These martial Jatis are the carriers of the age-old sanskaras of our ancestors in their genes. They are modern bearers of Dharma, and if beckoned, these sons of Dharma will respond with the same loyalty and ferocity as their glorious ancestors. The least we can do is to show our gratitude to these sung and unsung brave hearts. Human immunodeficiency virus, HIV, is a pathogen that attacks the T cell in the human body. T cells are a main defense against deadly pathogen. Doctor साहब ने अपनी डॉक्टरी दिखाई दी यहाँ पर. Okay. The leftist jihadi complex is the virus that has infected Hindu society and rendered our martial community paralyzed and ineffective. The complete introversion and aloofness of Rajputs, Sikhs, Dalit, Sahodars, Bhils, and other martial communities is a big glaring example of the success of the HIV virus. Only this time we will conflate HIV to Hindu immunodeficiency virus. अच्छा. हे भगवान. Lies have consequences. Horrible consequences that are borne majority by the women, children, and the weak of the society. Hindu society was always based on one eternal principle. What is that principle? Truth alone triumphs. Nothing else. What is there to debate? Satyameva Jayate. वही ना? If in this we can dispassionately establish the truth of the Rajput, Sikh, Jat, Marathas, Kakitiyas, Ahmas, and other innumerable great of our great nations, and disseminate the lies woven around our glorious resistance to Islam for 1,400 years, we would have rebuilt our path to recovery as the most valuable, oldest living civilization on this globe. This civilization war with Abrahamic faith is not over yet. Islamic imperialism has merely changed its method but persists in its design. In fact, it is more dangerous now with the left liberal forces providing the smoke screen to its real intention, Islamization of the subcontinent. This is possibly our last chance to correct our history, reestablish the ancient tradition of Hindu valor, and reach out with gratitude and respect to our warriors community so that they can be galvanized to action to completely uproot the Hindu immunodeficiency virus forever from our motherland. The Hindu society has to introspect and align its forces in this way, in this new kind of conflict which has been thrust upon it. All caste have to start talking to each other instead of talking at each other. When Islamic invaders ravaged Mewar, it was a united Mewar that fought and defeated these barbarians. That is the singular lesson for all Hindus to learn from this glorious saga. We may have thousand differences with each other, but when an external enemy threatens us, we forget those differences and close ranks to resist the enemy. The Brahmins have to give up their victimhood and lead the Hindus from the front like the priest Narayan Paliwal, who killed himself to prevent a fight between Pratap and Sakti Singh. Okay. Brahmins, who were the brains of the Hindu society, must prepare themselves for tapasya to devise ways and means to fight the Vidarbhis who have infiltrated our glorious nation. The martial communities have to break the spells of slumber and inaction and rise like a phoenix from the ashes of time to defend the Hindu Samaj from the all-round attack on its facing. It is facing. The martial communities, who are the reservoirs of passions and honor of Hindu society, must rekindle that fire of Kshatriya Dharma, and like Pratap and Hamir, lead the Hindu society to a new state of fearlessness and sacrifice for Dharma. The mercantile class, the Vaishyas, have to give up myopia and
So large-heartedness like Mama Shah and Tara Shah to not only open their coffers but actually stand and fight for dharmas. The wealth creator of Hindu society must use all their acumen to fill the lifelines of dharma with an unending supply of resources for our warriors to fight their civilizational struggle. The Shudras, the Dalitas, who I choose to refer to as Sahodras, are the muscles of the Hindu body, and all the intellects of Brahman, passions of Kshatriya, and wealth of Vaisyas has to flow to the Sahodras to activate the muscular response to the continuous onslaught on the Dharma. The Sahodras, like the beels of Mewar, have to form one last ring of defense around Dharma, like they did for Pratap to fortify Mewar and eventually annihilate the enemies of Dharma. Fueled by the support of all Varnas and Jatis, our Dalit Sahodras have to come out of their underconfidence and claim the leadership and resurgence of the Hindu society. Okay. Defeat is no longer an option for Hindus. Defeat this time will not allow us for a tactical retreat. We have run out of places to retreat to. A defeat for Hindus this time will mean total annihilation of Sanatana Dharma. That simply cannot be allowed to happen. Hence, a politico-economic awakening of Hindu is a matter of life and death, not only for Hindus but for the very survival of this little globe of ours. Oh, The bourgeois and the samurai. Okay. The communist bourgeois. Okay. Yeah, Communist bourgeois and the Japanese samurai. हाँ ये अरविंद के घोष की तरफ जा रहा है लगता है अभी कुछ ऐसा ही है अरविंदो की तरफ जा रहा है लगता है It would be prudent to end this book by sharing the writing of greatest Mahayogi of modern times, Sri Aurobindo. He brilliantly underlined the follies of the Hindus under and upper and middle class, and thus helps us decipher the decay set into our social fiber today. Through this understanding only, he prescribed the path to recovery as well. Arvindo sahab ka to maine padha tha. Okay. Comparing the fortunes of Japan and Bharat, which are both ancient civilizations and face external enemies, he goes on to analyze how Japan became a world power and Bharat remains a wretched third world country, struggling with poverty, corruptions, and abject moral decay. He ponders on a fundamental question: why has Japan so admirably transformed herself, and why has the attempt at transformation in India been such failure? Sri Aurobindo writes, the solution of problem of this kind has to be sought not in abstractions, not in machinery, but in men. It is the spirit in men which molds his fate. It is the spirit of a nation that determines its history. Okay. Japan remained faithful to her ancient spirit, the spirit of the samurai. In Bharat, the mass of the nation has remained dormant, but in the upper strata, a new type has been evolved to serve the necessities of the foreign rule. This type is क्या ये bourgeois है ना क्या ये bourgeois इसका उच्चारण bourgeois है ये कम्युनिस्टों का टर्म है क्या हाँ कम्युनिस्टों का टर्म है लेकिन फ्रेंच वर्ड है ये bourgeois अच्छा what is bourgeois upper class contented middle class citizen yeah the bourgeois is the average contented middle class citizen. Okay, he is a man of facile sentiments and skin deep personality, generally enlightened but not inconveniently illuminated. Okay, bourgeois in love with his life, his ease. का जो दूसरी तरफ है proletariat, commoner. जी ठीक है ना ये दादा जी 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 एकदम सही एकदम सही bourgeois और proletariat that's what it is. तो हम सारे proletariat हैं हम जी जी ओके अब bourgeois नेता लोग हैं हाँ मतलब वही in love with his life, his ease and above all things for his comfort, he is prescribed the secure maintenance of these precious possessions as the first indispensable condition of all action in politics and society.
whatever tend to, ये किसको गाली दे रहे हैं? अरविंदो गाली किसको दे रहे हैं? इंडिया में जिस समय अरविंदो ने लिखा होगा, किसको दिखा रहे थे ये सब कुछ कहानी? सबको, मतलब इंडियन लोगों को ही बोल रहे थे। जो मिडिल क्लास बना दी गई है इंडिया की, उनको बोला गया है बर्जियोस, जो कि क्या कहते हैं, सिर्फ अपनी नीड के लिए जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, ना उनको अपने एंसेस्ट्री का पता है। अगर मेरा सवाल ये है कि जब अरविंदो ने ये लिखा था, अरविंदो हैज रिटन दिस बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ, तो ये किसको लिख रहे हैं? उस समय तो वहां के राजा महाराजा हमको ही लिख रहे हैं ना, हमको ही लिख रहे हैं, जो इसमें फिट होता है इस क्लासिफिकेशन में, उनको लिख रहे हैं। क्या तुम लोग जो है अपना मतलब अपने कंफर्ट के लिए ध्यान देते हो, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते हो ना, पॉलिटिक्स में। जितनी भी कांग्रेस और कांग्रेस के फॉलोअर्स दैट्स व्हाट अरविंदो इज रेफरिंग टू। उसको हिंदी में सामंत शाही बोल रहे हैं ना, क्या ये वो वाला चक्कर है क्या? हाँ जी, जो ये कम्युनिस्ट बोलते हैं सामंतवादी बोलते रहते हैं, वही है क्या ये बुर्जुआस? हाँ। ओके। Anyway, when whatever tend to disturb or destroy them, he condemns as foolish, hair-brained, dangerous, or fanatical, and is ready to repress by any means of his power. अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रही है। Any means of his power, तो ये सेक्युलर भी इस पे फिट हो जाएगा, सेक्युलर आदमी भी इसमें फिट हो जाएगा। अभी सब लेकर दादा एक चीज मुझे याद आई है, मैं लेट मी फॉरगेट, अगर मैं भूल जाऊंगा तो फिर याद नहीं रहता है। 4-5 दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ बकवास किया था। ये क्या है? भाग्य राहुल गांधी ने कुछ बकवास किया था, तो कांग्रेस के एमिनेंट लीडर और सुप्रीम कोर्ट के लौंडियाबाज वकील, मैं इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूँ, सीधा ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट मारा। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं। ठीक है, अब बाद में उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम ये कास्ट सेंसस का तमाशा कर रहे हो ना, जो बिहार में हुआ है, उससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटिज्म है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो राहुल गांधी को ये सब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया कि ये जो विचार है ना, ये अरविंद मतलब ये लौंडियाबाज के खुद के हैं। मैं उसका नाम जान के नहीं लेना चाह रहा, सबको जिससे समझ के सारा। तो उस लौंडियाबाज वकील ने क्या बोला बाद में कि ये मेरे स्टाफ ने गलती से कर दिया है और इस ट्वीट को मैंने नहीं किया है। मतलब जो आदमी, जो वकील सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ में झगड़ा कर सकता है, लड़ सकता है, मनीष सिसोदिया के लिए टाई टाई कर सकता है, वो आदमी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने इस तरीके से बकवास करता है और जिन्होंने झूठ बोला। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि ये राहुल गांधी भी उस बुर्जुआ में आता है कि जो मैं कहूंगा वही सही है, जो मैं सोचता हूँ वही सही है। नहीं, वो तो ठीक है। दूसरा है कि मतलब यहाँ देखिए, मतलब ये थोड़ा एजुकेट करने के लिए इस वर्ड को लाकर बता रहे हैं कि वो अपने आप न लिबर्ट। देखिए, he has ideals and likes to talk of justice, liberty, reform, enlightenment, and all similar abstractions. Likes to talk about. He may not practice what he preaches. Oh, it's like that. अच्छा. In the conduct of public movements, he has an exaggerated worship for external order. He has an exaggerated worship for external order, moderation, and decorum, and hates over earnestness and over sternness. He has ideas and likes to talk of justice, liberty, reform, alignment, and all similar abstraction. The bourgeois is the man of good sense and alignment, the man of moderation, the man of peace and orderliness,
the man in every way respectable, who is the mainstay of all well-ordered society. For great adventure, tremendous enterprises, lofty achievement, the storm and stress of mighty and eventful period in national activity. He is unfit. He is unfit. देखिए, Okay. he is unfit. These things are for the heroes, the martyrs, the criminals, the enthusiasts, the degenerate geniuses, the men of exaggerated virtues, exaggerated ability, exaggerated ideas. He enjoys the fruit of their work when it is done, but while it is being done, he opposes and hinders more often than helps. ये सेंटेंस को दोबारा देखिए सर, क्या है? He enjoys the fruit of their work when it is done, but while it is being done, he opposes and hinders more often than helps. मदद नहीं करता, लेकिन जो बेचारा जज्बाती आदमी हो, मटर बनता हो, उसको देखिए कहाँ क्रिमिनल के साथ जानबूझकर डाले हैं, और अरविंदो जी जानबूझकर डाले हैं। exaggerated ability, exaggerated ideas, मतलब ये उनका exaggerated virtue। मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ, जब अरविंदो ने लिखा था तो उसके निशाने में कौन था? उसके निशाने में कोई मजूमदार और जय भारती और बीबी सिंह तो ना रहे होंगे। वो किनको लिखना चाह रहा है? वो किनको, सबको जो इसमें फिट होता है सब। नहीं तो ठीक है, हमारे बीच में भी ऐसे लोग तो थे, आज भी है ना, सेक्युलर लोग जो है वो ऐसे ही है, अपना नौकरी से मतलब है उनको, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, समाज में आदमी मरे जिए। आज की डेट में अरविंदो साहब का जो फिलॉसफी है वो एप्लीकेबल है, लेकिन जब अरविंदो ने ये लिखा होगा उस समय उनके दिमाग में क्या था? जो मैं उगलवाना चाह रहा हूँ आप उगल नहीं रहे हो उसको, बोलो तो। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। अब ये लिखना पड़ेगा कि ये अरविंदो ने कब लिखा था, और उस समय हमारे हिंदुस्तान में कौन लोग तो बुर्जुआ थे। नहीं अंग्रेजों के चाटुकार थे ना, सब अंग्रेजों के चाटुकार तो थे। आप लाइक मारो, मुझे वही लगता है ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के ऊपर लगता क्या है सर, आम लोगों में भी तो चाटुकार थे बहुत। हाँ, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि शहीद भगत सिंह अगर मर गए, चंद्रशेखर आजाद उसका फायदा उठाना है, उसका फायदा उठाना है, उसका फायदा तुम उठाओगे। दैट्स व्हाट ही सेज। हाँ यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दादा उस टाइम और भी बहुत थे ना ऐसे जो उस टाइम पे चाटुकारिता करके आज अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, यानी 2-2 3-3 फैमिली जो उनकी जनरेशन है उन्होंने चाटुकारिता ही करी है। जो पहला यानी जो जज बने होंगे, जो सिविल सर्विसेज में उस टाइम गए होंगे, जिनके बच्चे आज भी लगे हुए हैं, तो ये वो वाले सब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जी सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपना गांधी है, जो आया और लाला लाजपत राय का रेवोल्यूशन जो गर्म दल वाला था हाईजैक कर लिया। 1914 से शुरू होना था वर्ल्ड वॉर। अंग्रेजों ने सोचा दादा ने जो लिखा है ना, अरविंदो दादा ने जो लिखा है ना, ये शायद सुभाष के मरने के बाद या सुभाष को जब कांग्रेस प्रेसिडेंट से हटाया है ना, उस समय का लिखा हुआ है ये तमाशा। अरविंदो दादा तो 1950 के बाद भी जिंदा रहे हैं, शायद 51-52 में मरे हैं। हाँ, तो उसी समय इन्होंने जब ये सुभाष के सैक्रिफाइस की वजह से देश छोड़ के गए ना ये लोग, अंग्रेज लोग, तब इसने लिखा होगा कि हाँ भाई ठीक है, साले मरे तो दूसरे लोग, जहाँ दूसरे गए और तुम मजा मार रहे हो, ऐसा कुछ हुआ होगा इनके दिमाग में। जी हाँ, फल तुम खा रहे हो। हाँ, ये मजा दूसरे का कर्म का फल तुम भोग रहे हो। दादा ये मजा मारने के लिए ही तो आए थे सब। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जापान के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। जापान में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान वापस डेवलप कंट्री बन गया, वहां पे बोल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग 2 एटम बम, जापान कुड गेट अप ऑन इट्स ओन, जबकि इंडिया का सत्यानाश हो रहा है। और ये अरविंदो अपने टाइम में लिख रहे हैं। एनीवे, चलते हैं आगे। इसको थोड़ा समझना जरूरी था कि लेकिन क्योंकि अरविंदो की राइटिंग को एक बार आप पढ़ करके बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, पता नहीं क्या दिमाग में। नहीं सर, समझ जाओगे आप। देखिए सर, ये नीचे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, पढ़िए आप, धीरे धीरे देखिए कि कैसा है।
a little art, a little poetry, a little religion, a little scholarship, a little philosophy, all these are excellent ingredients in life and give an air of decorous refinement to his surroundings. They must ठीक है not be carried too far or interfere with great object of life, which is to earn money, cloth, and feed one's family, educate one's sons to high pitch of the BA degree or the respectable eminence of the MA, marry one daughter decently, rank high in service or the professions, stand well in the eye of general opinion. And ये बुर्जुआ की बात कर रहा है, हाँ हाँ जनरल हाँ opinion and जी जी काट के रख दिया यार, इसमें तो बोलो तो क्या ठीक तो लिखे हैं तो ठीक तो लिखे हैं नहीं नहीं, मैं उन बेवकूफों को तो काट के रख दिया इन्होंने, हाँ 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 एंड अच्छे डाई शब्द में क्रेडिटेबली एंड रेस्पेक्टेबली। अरे बाप रे, ये तो घर में एक इसको जिराफ करवा करके गोल्डन वर्ड में मड़वा लेना चाहिए भाई। वाह, डॉक्टर रत्नो कहाँ से लेकर के हैं, ये भी बहुत रिसर्च किए भाई ने। Does not this brilliant description by Sri Aurobindo sums up the entire schizophrenia of the Hindu society? Yes, it does. Our education and tilting towards Western civilization makes us bourgeois, while something within us keep telling us that we are fierce and formidable samurais. Okay. फिर आगे लिख रहे हैं, bourgeois may give stability to a society, it cannot reform or revolutionize it. Okay. Bourgeois may make the politics of a nation safe, decorous and reputable. It cannot make that nation अरे बाप रे, ग्रेट और क्या फ्री। हुआ? ये तो डैगर से मार रहे हैं यार, क्या मतलब आज है? आज आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये मतलब सही बैठता है एकदम। कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। तो वो नाउ अरविंदो के वर्ड में भारत बोल रहे हैं, वो इंडिया नहीं बोल रहे हैं। Bharat was an amalgam of highest ideals man nature could achieve and use for the society. Brahman who devoted himself to poverty and crushed, ये दयावर्ती साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The Brahmans who devoted himself to poverty and crushed every desire in the wholehearted selfless pursuit of knowledge and self-discipline. The Kshatriyas who hurling his life joyously into the shock of chivalrous battle, held life, wife, children, possession, ease, happiness as mere dust in और क्या वर्ड यूज किए हैं भाई, हाँ धूल के बराबर है। In comparison with honor and the Kshatriya dharma, the preservation of self-respect, the protection of the weak, the noble fulfillment of princely duty, the Vaisyas who, toiling all his life to amass riches, poured them out as soon as amassed in self-forgetting philanthropy, holding himself the mere steward and not the possessor of his wealth. The Sudras who gave himself up loyally to his humble services, faithfully devoting his life to his dharma, however low in performance, to self-advancement and ambitions. Preference to self-advancement and ambition. These were the social ideas of the age. The bourgeois came up as a class of their own in independence Bharat. Okay. अवगढ़ आगे आओ, इंडिपेंडेंट भारत बोल रहे हैं। And seer in nations from want of light, room and air, the Kshatriyas died out of the soil which had first produced him, and the bourgeois took his place. But if room was none for the soldiers and the statesmen, little could be found for the Brahman, the sage, or the sannyasin. Independent Bharat had no need for scholars. तो पढ़ने में अजीब लग रहा है। हाँ, तो इंडिपेंडेंट भारत had no need for scholars. It wanted clerks. जी हुजूरी करते रहिए।
Oh, pray. The bourgeois infected every sphere of Hindu life. He was speaking lofty lies and slogans to the nations as a politician, teaching lies of secularism and socialism to unsuspecting students as a professor in universities, spreading falsehood of Ganga Jamuna Tehzeeb throughout the Bollywood, preserving the deathly status quo via the bureaucracy, inventing and sustaining historical lies like Delhi Sultanate and Mughal Empire, pursuing falsehood of weekend theme, parties and foreign vacations promised on the spurious freedom from the British while spurious. Whoa. Correct. Whoa. Spurious freedom. क्या वर्ड यूज किया है भाई अरे वाह while the real task of parental building and nation building was completely forgotten, the bourgeois even infected two second institutions of our great dharma, the military and the Hindu ashrams and mathas. Yes, correct. अब आपको समझ गया किसके बारे में बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं. Hindu and Sikh military man is devoid of the Shatru Bodh, enemy consciousness, even as he valiantly performed his duty, because our Dharmachars and Matadhisas have failed to identify, campaign, and articulate the actual enemy of civilization, the jihadis and the missionaries. So we continue fighting Pakistan without realizing that we are not fighting a nation state, but an idea of pan-Islamism, aiming at takeover of the Vedic Bhumi of ours through Gajwai Hind, assault on Hinduism. The Hindu sadhus have thus been reduced to moral science teachers instead of carriers of the nectar of Vedanta. The spiritual bankruptcy of our acharyas and teachers have been the single biggest reason of existential predicament Hindus find themselves in. Politics. आ गया भाई साहब वहां पर वो जो बच्चा आ गया वो पॉलिटिक्स ऑफ मेडिकल माइंड्स लाइक मोहनदास, उसको महात्मा नहीं लिख रहा है. देखो पहले मिस्टर मोहनदास लिखा था, मैं मिस्टर बैठा दिया इसने यहाँ पे. हाँ तो दादा अगर मैगजीन पढ़ के ज्ञान देगा तो आदमी महात्मा थोड़ी लिखेगा. लाइक मोहनदास गांधी, जेएल नेहरू, इसको जवाहरलाल नेहरू भी नहीं लिख रहा है, जेएल नेहरू लिख रहा है. एंड हिज कोटरी sitting over mindless and bonds of partisan of this glorious nation. A madrasa educated Abdul Kalam Azad became the first education minister of this nation. No Christian asked about the merit and art competition of a person without any formal education holding a post as a crucial education minister. The history taught in this nation is an edifice of slavery built on stinking lies that only evoke repulsion and anger in the reader. And this slaughter of our history continued in full worldwide worldview as 5 Muslims became education minister while the bourgeois looked on indifferently. From Maulana Azad to Humayun Kabir, Muhammad Chagla, Fakhruddin Ali Ahmad, Nairul Hassan controlled the education ministry and played havoc with our history. This book has raised the issue of inactivity and mediocrity of Hindu intellectuals' leadership in almost every chapter. Here too, the bourgeois gave his due, for peace, comfort, and safety are the very breath of his nostril. But he gravitated to a peace for whose preservation he is not called out to wear armor and wield the sword. To comfort he has not to purchase by the discomfort of standing sentinel over the liberties. The bourgeois intelligentsia simply allowed this murder of Hindu ethos and were under Islamic propaganda. We read and thought, but we did not live what we read and thought. Okay. We read and thought. Read. We read and thought, but did not. We read and thought, but did not live what we read and thought. Our experiences were mere mental imagination. So our existence grew over more artificial and unreal. The fighter and the thinker in us dwindled as the bourgeois flourished and grew. The bourgeois delight in convention because truth is too hard a taskmaster and makes too severe a demand on character, energy, and intellect. Thus, Bhagavad Gita, which demand extreme action from each of us, was relegated to the background on spurious memes, flood and social media, spreading lies of peace and coexistence with Dharma.
bourgeois crave superficiality because to attain depth required time and energy, which would have to be unprofitably diverted from his chief business of making his individual way to the world. Thus, Way in all the are world. have this wild platonic feel about them. Our professional and personal relationships lack the root needed to nourish a healthy society. Thus, the deracinated bourgeois created by Western education is the biggest facilitator of jihadis and missionaries, especially क्या? Especially Harvard or Stanford and missionaries. जी Yeah, Harvard, Cambridge and missionaries gnawing at our nation. To this extent, the fact that Western education could not percolate to a vast mass of Hindus not becoming a blessing has become a blessing in disguise. For among the rural and semi-urban Hindus, we still find the remnant of Kshatriyas who, जैसे अवगढ़ है हमारे सामने बैठा हुआ, remnant of the Kshatriyas who, given the right leadership, will not hesitate to die and kill the dharmas like a true soldier. A people true to itself, a race that hopes to live, will not comfort itself and trap the manhood by the opiate of empty formulas and specious falsehood. It will rather prefer eternal suffering and disaster. For in truth, as our old thinker used to insist the whole universe stand, truth is the root and condition of life, and to believe a lie, to live in a lie, is to deliver oneself to disease and death. The teaching that peace and security are more important and vital to man than liberty is a lie. Bourgeois lives this lie. अच्छा ऐसा है. कहाँ घुस गया? He skittles and रत्नु साहब ने पूरी अपनी जितनी बढ़ा के सब यहाँ पे निकाल के रख दी. Hence he skittles any remnant of resistance that the Kshatriya element of Hindus put to the Brahmic onslaught on our on our dharma. The doctrine that social and commercial progress must precede political strength and liberty is another example, extremely dangerous lie. For a nation is no aggregate of separate functions, but a harmony of functions, of which government and political arrangement is the oldest, most central, and most vital, and determine the others. Without a just political system, impartial policing, and a functioning judiciary, along with an army of honorable men manning government institutions, all social and economic progress will crumble like a pack of cards. Okay, and a functioning judiciary. Okay, ये भी बोल रहे हैं वो. Bourgeois simply incapable of being those men of honor. Fortunately for Hindus, the ancient tradition of some of our great decision sages have managed to survive this onslaught, and great minds keep taking birth on this blessed land of ours to remind us of our real worth and place in the mysterious existence. Referring to Swami Vivekananda, Sri Aurobindo writes, अरविंदो की राइटिंग पढ़ते हुए तो मेरे को बहुत सिरदर्द होता है यार, बहुत तकलीफ देते हैं. British rule in India has been a record success in history in the hypnosis of a nation. ये क्या मतलब है? दादा बताओ तो. Hypnosis of a nation. ये पूरा देश को यदि आप हिप्नोटिक स्टेट में लाओगे तो रूल करना आसान हो जाएगा ना, इसीलिए सक्सेसफुल रहा ब्रिटिश रूल. क्योंकि जितने ऊपर जो लोग थे उनको उनके हाथ में पावर दे दिया गया, बोला नीचे जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करो तुम लोग. इंडियन के साथ इंडियन को भिड़ा दिया ना. और क्या, इंडियन के अगेंस्ट में भिड़ा दिया, करोड़ों के ऊपर राज कर दिया उन लोगों ने. बराबर है. It persuaded us to live in death of the will and its activities, taking a series of hallucinations for real things and creating in ourselves the conditions of morbid weakness and hypnotist desire. The master of hypnotist है British. Hypnotist है British. Morbid weakness, condition of morbid weakness में लाया ना लोगों को भारत के. ये कौन लाया? Hypnotist है British. Until the master of a mighty hypnosis laid his finger on India's eyes and cried awake. ये विवेकानंद बोले थे ना, arise awake. तो बोल रहा है कि until the master of a mighty hypnosis laid his finger on India's eyes and cried awake. Awake. Okay.
Then only the spell was broken. The slumbering mind realized itself. Okay. But he is talking about late 19th century. स्वामी विवेकानंद, हाँ, लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना वो, उसके बाद इस नंबर से उठे। ओके, वो शिकागो में और जब जहां भाषण दिया था ना। अच्छा, भाषण तो दिए थे, उसका भी कहानी अलग है, कभी बताऊंगा बाद में। भाषण नहीं दे पाए, वो भी लास्ट मोमेंट तक हमारे यहाँ के लोग ही जो है कोशिश किए थे, ताकि वो पहुंच ही नहीं पाए, स्टेज तक भी चढ़ नहीं पाए। ये तो बाद में कभी बताऊंगा मैं इस विषय में। Then only the spell was broken, the slumbering mind realized itself, and the dead soul lived again. Okay, dead soul lived. Swami Vivekananda infused confidence and vigor in the collapsing veins of the Hindu society just before the leftist jihadi cabal started its strode dance. Strode dance, ये क्या है? Strode क्या मतलब? गलत तो नहीं, street तो नहीं है? स्टोर्ट डांस तो अपना मतलब जो आज देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, जो सब चीज या बाहर जो नैरेटिव आप देख रहे हैं, उसी के विषय में बोला जा रहा है। हिंदी में कैसे समझाऊंगा? एक चीज सर, बाय द वे सर, मैं बताऊं आपको, इस बार जो शिकागो सम्मेलन का जो मतलब होता ना, ईयरली एक होता वहाँ अमेरिका में, जय भारती साहब जानते होंगे, तो हिंदुओं को मतलब बहुत गाली दिया गया वहाँ, और पूरे जिहादी लोग के कंट्रोल में वो था। उन लोग काफी बोले, एक आध हिंदू लोग चढ़कर बोले भी थे, लेकिन वो मतलब वॉश्ड वर्जन ऑफ डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म। हाँ, बाकी लोगों को बोलने नहीं दिया गया। सर जय भारती सर जानते हैं इस विषय को आप? हर साल शिकागो सम्मेलन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस साल ऐसा ही हुआ, मतलब कोई बोल नहीं पाया। Hindu Samaj has to give up on the bourgeoisie and respond to Swami's clarion call. Okay, for good or bad, it is the middle class that now leads in India, and whatever saving impulse comes to the nation must come from the middle class. But for that to happen, the middle class must, by a miracle, be transfigured and lifted above itself. By a miracle, इसको नोट कीजिए सर, by a miracle, मतलब he has given up hope. He has given up hope. Only a miracle will transform the middle class. Be transfigured and lifted above itself. Lifted above itself, the natural breeding ground of the bourgeoisie. It must become the breeding ground of the samurai. Okay, it must cease, in fact, to be a middle class and turn itself into aristocracy, and especially not of birth or landed possession, not of literature, not of wealth and commercial enterprise, but of characters and nations. India must recover her faculty for self-sacrifice, okay, courage and high aspiration. We are the luckiest people on this globe who are the heirs of the most noble and glorious Kshatriya tradition. Kshatriyas who looked into the eyes of death and did not blink. Kshatriyas who suffered loss of life and limb joyously. Kshatriyas who refused to be lulled into complacency by a sweet-talking Islamist. Kshatriyas who fearlessly attacked and defended their women, land and women and gods. Kshatriyas that are not a jati but a trait to stand for truth and freedom. Kshatriyas that struck fear in the heart of rapists and murderers attacking our motherland. Kshatriyas that drank from the cup of loyalty even as they were torn to thread. Kshatriyas who were living embodiment of valors and sacrifice. Kshatriyas who were preservers of fragile beauty and sublime art. Shivaji. Okay. There is only one way for Hindus to survive, and this crucial civilization battle enter its most critical and final phase. It is the death of bourgeois. Achha. It is the rebirth of samurai, the Kshatriyas. The entire Hindu society has to unite and rise as Kshatriyas against the demon of antagonistic faith and the leftist ideology to break them physically, economically, and morally.
Time has passed on the baton of Hindu revival to our generation. This golden opportunity. Time has passed on the baton of Hindu revival to the generation of Pradeep and Aurangzeb Singh and all. This golden opportunity is for us to destroy the murderous ideology that has devoured our ancestors for 1,400 years. Now, it has fallen upon our soldiers to destroy the very speed of this darkness from our glorious nation. Let us imbibe the words of the greatest Maratha warrior, Chhatrapati Shivaji Maharaj, when he rode to his sermon from the deathbed. इसको क्या बोला था उन्होंने? मैं 1 मिनट इसको अपने मोबाइल में हिंदी में पढ़ के, ये हिंदी मराठी में जो भी होगा पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो हिंदी करता है उसको गोल गोल कर देता है। 1 मिनट देखता हूँ क्या है ये, क्योंकि इसका मराठी में हिंदी में जो भी होगा उसको पढ़ना है दादा। डू यू एग्री? जी 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 जी। इसका क्या मतलब हिंदी में लिखा होगा ना इन्होंने, या मतलब देवनागरी में लिखा है, इस चक्कर में ये किंडल वो नहीं कर पा रहे। 1 मिनट, आजा भाई महाराणा, खुल जा। यस, क्या लिख रहा है ये? हाँ, मैं ये लिख रहा है टू हिज समन फ्रॉम हिज डेथ बेड, ये लिख रहे हैं आम्ही जातो, आमचा काल झाला। मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है, यही तो। मैं जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया है। मुझे क्या हुआ? हाँ, समय आ गया। काल झाला मतलब काय नहीं लिखा, काल मेरा समय आ गया है। तुम्ही सप्त सिंधू यमुनाच्या हातून मुक्त करा। तुम इस सब सिंधु को मुसलमानों के हाथों से मुक्त करो। काशीच्या श्री विश्वेश्वर सोडवा, काशी के श्री विश्वेश्वर को मुक्त कराओ। 12 ज्योतिर्लिंगा या यमुनाच्या हाथून मुक्त करा, 12 ज्योतिर्लिंगों को यमन के हाथों से, मुसलमानों के हाथों से मुक्त कराओ। हिंदवी स्वराजता आणात, हमको हिंदवी स्वराज लेकर के आना है। शुकुर हो नका, भूलो मत। मतलब वहां से उससे उस रास्ते से आपको विचलित नहीं होना है। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ते क्या लिख रहे हैं? मीनिंग आई लीव, माई टाइम हैज कम। ओके, यू हैव टू लिबरेट द 7 seas फ्रॉम द यमुनास, liberate the Lord of the world Kashi and the 12 Jyotirlingas from the clutches of Yamunas. Establish Hindvi Swaraj anyhow. Let there be no deviation. Wow, वारे शिवाजी महाराज। लेकिन एक बात है दादा जी सर, अगर राजा मान सिंह ने इनकी हेल्प ना की होती तो ये तो मार देता औरंगजेब इनको। हाँ जी जी जी। Do we Hindus have it? अच्छा, ये लोग हिस्ट्री में कहीं पढ़ाते हैं कि मतलब शिवाजी महाराज कैसे वहां से बच के भागे? किसने उनको हेल्प किया? भागे टोकरी में बैठकर भागे, फलों का टोकरी, कोई लिखता है स्वीट्स का टोकरी, जो मर्जी अपना लिखता है, लेकिन कैसे, मतलब कौन हेल्प किया ये नहीं बताया जाता। वो ग्वालियर के शायद तोमर लोगों ने भी हेल्प किया था ना उनका को। हाँ, तो उतना दूर रास्ता तय करके वापस जो महाराष्ट्र आए कैसे है? यदि रास्ते में लोग हेल्प नहीं करते तो पकड़े जाते ना फिर से। और हमारे शायद चित्तौड़ वाले ने भी, राजा राज सिंह ने भी उनको हेल्प किया था, उनको बीच में रोका था इनके फौजों को कहीं। हाँ, तो रुके थे, उनको शरण दिया गया था, तो जितने लोग दिए थे हेल्प तो किए। वो जहां से वो निकले महाराष्ट्र पहुंचने के पहले, जिस राज्यों से वो निकले, मतलब उन लोग हेल्प किए ही थे उनको। Do we Hindus have it in us to carry out the final order of our great General Chhatrapati Shivaji Maharaj? This victory of Hinduism must be final. We have to establish a just, fair and prosperous Hindu Rashtra so that demon of jihad do not ever rise again. It is our honor and duty to finish the unfinished work of Maharanas of Mewar. That would be the true Sidodiya to the great
Maharanas of Mewar who watch us from heaven, यही लिखना चाह रहे होंगे शायद, from the स्वर्ग, हाँ heaven, never forgive, never forget. जय हर हर महादेव। क्या बात है, खत्म हो गया मेरे भाई ये कहानी। लास्ट में एकदम सही बात कही है, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। यस, कभी नहीं। जो अगर लोग ये कहते देख हैं पाए ना तो कि मारो सालों को, इनको खत्म करो बेवकूफों को। 2 घंटा दादा 10 जो मैं लोग तो कहते हैं ना इंतजार कि कर रहा हूँ कि कब 15 मिनट के लिए पुलिस हटेगी। मेरा इंतजार है कि 15 मिनट के लिए पुलिस तो हटे। तुमने तो अपना पूरा पूरा जो है वो दायित्व योगी को दे रखा है ना। योगी तो अपने आप संभाल रहे हैं ना, सारी दुनियादारी कर रहे हैं। तुम काहे को चिंता कर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लगे हैं, पर हम लोग का एक पर्सनली भी दायित्व है ना। अच्छा दादा, आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगता है हिंदू के लिए? सेकुलर्स। है हमारे बीच में जो वो बंदे हैं, नवबोध हैं और ये सेकुलर है जो जिसको अवगढ़ बोल रहा है, ये दोनों। मुसलमान तो फिर भी ठीक है, उनको निपट लेके। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे सोसाइटी में जो अनजान शत्रु घुसा हुआ है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, मैं क्योंकि मुसलमान को जानता हूँ इस्लाम मेरा दुश्मन है, उसको तो मैं किसी भी तरीके से बचा लूंगा और रो रहूंगा। लेकिन जो मेरे अंदर घुसा हुआ है ना दुश्मन, मेरी सोसाइटी के अंदर घुसा हुआ है, जो उनको सपोर्ट करता है, किस लिए सपोर्ट करता है, पैसे के लिए सपोर्ट करता है, वो हमारा दुश्मन है। मैं ये बोल रहा हूँ। सोसाइटी के घर में घुसे हुए हैं लोग, घर में हैं। हाँ, एक और लाइन आई थी, ये परिवार बात में आप भी है। सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो ये कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी है, जो इसके लोग ऐसे होते हैं जो पहचान में नहीं आते। ठीक है, इस्लामिक ठीक है, वो अलतकैया करेगा, लेकिन वो हिंदू बन के मेरे साथ नहीं घुसा हुआ होगा हर टाइम। लेकिन कल तुम ही तो बता रहे थे कि जो साला खादी कुर्ता पहन करके और पजामा पहन करके और हवाई चप्पल पहन करके, या जो एयरक्राफ्ट की जो टायर होता है उसकी चप्पल पहन करके और गांजा लेके बीड़ी लेकर के पीता रहे, वो कौन है? वो यादव है ना, योगेंद्र यादव जैसा चूतिया जो घूमता रहे, उससे तो दूर रहने का। कौन दूर रहने का? दादा, बीबी दादा, अभी आपने पूछा कि दुश्मन कौन है, ठीक है? आप सब सुनिए, अगर आपको ध्यान हो, पिछले साल जब सच वाला का चैनल बिल्कुल आग की तरह फैला, और सच वाला हमेशा एक बात करता था, एक एग्जाम्पल देता था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। वो कहता है कि मेरे घर के सामने जहाँ मैं रहता था या रहता हूँ, एक परिवार है हिंदू, वहाँ एक पिताजी हैं, एक माताजी हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। पिताजी है वो कभी मंदिर नहीं जाते, कुछ नहीं, कोई प्रोफेसर होंगे। माताजी हैं जो सारा वक्त पूजा पाठ में लगी रहती है, और जो बेटा है वो पता नहीं क्या है, और जो बेटी है वो कम्युनिस्ट है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, उसने बोला क्या। उसने अगर ये सही पिक्चर पेंट किया होगा, ऐसे बहुत हिंदू, ठीक है, तो आपको अगर हमारा हिंदू परिवार इस स्थिति में है, आपको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपकी घर की दीवारें कमजोर ऑलरेडी को क्या कहेंगे, पहले से ही कमजोर हैं, उनमें सुराख छेद हैं, क्योंकि वहां से डिफरेंट तरह की एक आइडियोलॉजी आ चुकी है। और एक आइडियोलॉजी हिंदुओं में ये है कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना। वो ठीक है, वो तब था दादा कि जब अब्राहमिक फेथ का हमारे से आमना सामना नहीं हुआ था। जब भारतवर्ष में कोई बाहर का 4 वक्त भी घूमते थे सड़कों पर, उनका सम्मान होता था। लेकिन अब्राहमिक फेथ से अभी हमारा पाला नहीं पड़ा था, तो ठीक था। अब अगर आज किसी हिंदू परिवार में कोई कहता है कि भाई मैं किसी को नहीं मानता, बहुत आपने अपने पतन का पहला जो क्या कहते हैं स्टेप को क्या कहेंगे, कदम जो है,
वो आपने ले लिया। अगर आप कहते हो कि मैं किसी चीज पर नहीं मानता, क्योंकि आज के समय में आप अगर अंदर से मानो ना मानो, लेकिन आपको एक नारे और एक ध्वज के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। मैं जय श्री राम हर बार क्यों बोलता हूँ? हम सब, आपने देखा होगा कि आप सब हर हर महादेव, कोई जय हनुमान बोलता है। मैं जय श्री राम क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे लगा कि ये एक नारा है जिससे कम से कम हिंदू समाज इकट्ठा हो सकता है। बाकी से दादा मेरे को इससे सब जुड़े हुए हैं, चाहे जो हर हर महादेव कहेगा वो भी इससे जुड़ा हुआ होगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। साहब हंसने की बात है। मैं एक बार बताऊं मैं क्यों बोलता हूँ। जय श्री राम में बोला करता था जब तक हमारा अयोध्या का मामला जो पेंडिंग था। अब अयोध्या का मंदिर बन रहा है। अब मैं महादेव को बोलता हूँ क्योंकि मेरे को अब काशी विश्वनाथ टेम्पल चाहिए। क्या भाई, मेरे मन की बात कह दिए दादा, कसम से। ज्ञान वापी चाहिए। उसके बाद फिर मैं जय कृष्णा बोलो करूंगा जब मथुरा चाहिएगा मेरे को। ठीक है मेरी दादा दादा और दूसरी चीज, हर हर महादेव नागा साधु जो रहते थे, वो क्या कहते हैं, नागा साधु और वो अघोरी साधु, वो लगाते थे युद्ध करने के लिए। तो इसीलिए मैं हर हर महादेव का हमेशा लगाता हूँ कि हमेशा तैनात रहो। ये नारा खुद भगवान राम की सेना भी लगाती थी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो वीवी दादा ने बोला कि अभी शिव का मंदिर, मैं खुद अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मैं भी एक समय में मैं काम करता था, वो आधा पक्का होता था, मैं दूसरे काम पे लग जाता था। काफी सालों से यहाँ रहने के बाद एहसास हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ आने पर, भारत में भी मैंने अपने पिताजी को कहा, जब तक एक काम पूरा नहीं होता था वो दूसरे में हाथ नहीं डालते थे। एक काम करो लेकिन उसको ऐसा करो वो इतना मजबूत हो जाए कि वो हिल ना पाए। आप बहुत सारी पतंगे नहीं उड़ा सकते, आपका हाथ कट जाएगा या आपकी पतंग कट जाएगी। आप एक पतंग उड़ाइए, उसकी रस्सी मजबूत हो, पूरा फोकस उस पे हो, और सारी जो आसमान में जो और पतंगे हैं उसको काट दीजिए। ऐसा नहीं कि एक चढ़ाई, एक पे पेच लग गया है, दूसरी उड़ाना शुरू कर दो। मेरा ये कहना है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक काम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, फिर आप दूसरे पे जाओ। जय भारती साहब, एक बात बताऊं आपको, मजाक क्यों लगेगा आपको। 4-5 दिन पहले मुस्लिम पक्ष ने क्या बोला है मालूम है यहाँ के काशी के बारे में? कि वो तो दूर से ही दिखाई दे रही है ना कि हाँ वो मंदिर था, तो काहे को वहां पे सर्वे करवा रहे हो? अब इस तरीके से जा रहे हैं वो लोग। चलो बोल दिया ना, अगर मंदिर है तो बात ठीक है, फिर मंदिर है तो फिर अब हमारा है, बात खत्म हो गई, एक्नॉलेज हो गया ना। कोर्ट बोलता है जब हमने ऑर्डर दे दिया तुम बकवास कर रहे हो। अब ये क्या मतलब है? सर्वे पूरा होने दो ना। सर्वे को रोकने के लिए अब इस तरीके से आप बहाना मार रहे हो कि दूर से दिख रहा है कि हाँ वो मंदिर था। दादा अब जो है बेइज्जती हो रही है ना, जो इन्होंने लवादा ओढ़ रखा था ना, ये जो थोड़ा सा एक आध बीच में आ जाते थे अलतकैया करने की, अरे नहीं वो ऐसा नहीं है, फलाने आदमी ने ऐसा कर दिया, नरेंद्र मोदी जब से आया तब से ये हो रहा है। तो ये सारे इस तरीके के बहाने मार देते थे वो, ठीक है, अलतकैया कर देते थे। अब हो रहा है, सच निकल रहा है सामने, तो लग रहा है कि वो अलतकैया वाली फिगर चली ना जाए। और कुछ कहना है किसी को? हिरण में वांट टू से एनीथिंग? तो बहुत सारा है कहने को। नहीं, आज का डिके ऑफ सिसोदिया, डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, साइलेंस ऑफ लायन, लायंस ऑफ डिसॉर्डर, इसके बारे में अलग से क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इसको खत्म करें। सवा 2 घंटे हो गए हैं। हाँ, बाद में कोई देखता नहीं है इसको फिर। अब नहीं ऐसा ना देखे तो जाने दीजिए ना, मतलब बंद मत कीजिए। हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन बात होता है, हम थोड़ी बकवास करते हैं। अरे तो बैक में करेंगे ना बात यार, तो बैक में कहेंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ और भी बोल सकते हैं ना यार। यहाँ पर तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली और क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है ना। चलिए तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का परीक्षा हो जाए, कौन कितना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज कर सकता है। पार्लियामेंट्री यूज नहीं करने का यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में गड़बड़ होता है। जैसे जय भारती साहब बोलते हैं कभी कभी महिलाएं और स्त्रियां भी देखती हैं, वही इसके बारे में वो सब चीज यूज नहीं करने का उसको।
लेट अस स्टिक टू द टॉपिक। महाराणा लोगों ने हमारे को काफी मतलब महाराणा लोगों ने हमारे लिए काफी सेक्रीफाइस किया हिंदुओं के लिए, और शिवाजी महाराज ने भी किया, बाकी लोगों ने सेक्रीफाइस किया। हमारी जो इतिहास है उसको गलत तरीके से हमारे को पढ़ाया गया है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी जनरेशन को और अपने आने वाली जनरेशन को सही बात बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब राजपूत लोग जो है हार गए थे, और जो ये इस्लामिस्ट थे इन लोगों ने पूरा का पूरा इनको हरा दिया था, ये किया था, तो उनको सही हिस्ट्री बतानी जानी चाहिए कि राजपूत कभी हारा नहीं है इनसे। अगर राजपूत हारे होते तो जहांगीर और शाहजहां मेवाड़ के साथ में संधि ना करते। हम लोगों ने बाकी भी कवर किया। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया है रात को, जबकि इनको ये नहीं करता। रात को वहां पर आकर के उसको घेरा था उन्होंने, तब उठा के लेके गए। औरंगजेब को भी दौड़ाया नहीं जाता, फिर औरंगजेब को भी दौड़ाया नहीं जाता। औरंगजेब को मारा ने, औरंगजेब को पीट पीट के मतलब बुरा हालत किया हमारे रानी ताराबाई ने। एक चीज मैं बता दूं, देखिए वो पृथ्वीराज चौहान के घर के बहू है। पृथ्वीराज चौहान के जो पहले मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था उसमें बहुत भयंकर उसकी हार हुई थी कि उसके जो चाचा थे पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी को घसीट के लाए थे और कदमों में डाल दिए थे पृथ्वीराज चौहान के कि ये देखो, और ये हार गया था। उसका मेन कारण ये था कि डायरेक्ट टू फ्रंट फाइट हुई थी, और जो राजपूत थे वो तलवारबाजी में बहुत माहिर थे, वो दोनों हाथों से तलवारबाजी भाला चलाते थे। तो ये फिर इस माफी मांगी पैर में गिरा जो साहिस्ता ने लिखा है, और फिर ये फिर वापस गया। फिर इसने घुड़सवार और धनुषधारियों को हायर किया कि घुड़सवार ज्यादा लेके चलो, उनके साथ धनुषधारियों को। तो उसके बाद ये फिर जब लेके आया इधर, ये लोग अपडेट हुए नहीं, और ये लोग उसी मतलब पैदल सेना में ज्यादा थे, घुड़सवार भी थे और हाथियों को आगे किए हुए थे। तो भाई अगर कोई घोड़े पे है, कोई जमीन पे है, फाइट कर रहा है जमीन से, तो घोड़े वाला प्लस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, वो तो ऑब्वियसली होगा। तो एक कारण ये था पृथ्वीराज चौहान का हारने का, और दूसरा कारण ये था कि जब ये दूसरी बार आया तो पहले 3-4 दिन तो मतलब कैंप पड़े रहे आमने सामने की संधि हो जाएगी, चले जाएंगे और युद्ध टल जाएगा, ये हो जाएगा। जब लास्ट वाला दिन युद्ध हुआ तो रात को इसने हमला किया, और हमला करके सोते हुए सैनिकों को कैंपों में आग लगाई, जला दिया। तो काफी लोग मर गए, अफरा तफरी हो फैल गई। तो कई राजपूत इधर उधर के जो थे वो चले गए छोटे, और कुछ सेनाएं बची थी, मतलब काफी सेनाएं बची थी, तो उसमें कई सारे घायल थे और रात के थके हारे थे और मनोबल भी डाउन हो चुका था। तो फिर सुबह युद्ध हुआ तो उसमें इतनी फाइट नहीं कर पाए थे। जी दादा, युद्ध हुआ कहाँ? युद्ध हुआ नहीं था। ये हिस्ट्री वाले गलत लिखते हैं। तराई की लड़ाई में सुबेरे 3-4 बजे जब वहां पर इन्होंने अटैक किया तो सारे जो तंबू वंबू जला दिए, और जितने भी थे ना वहां पर उनको मार दिया, या तो बंदी बना के लेके चले गए। उसमें पृथ्वीराज चौहान को भी लेके चले गए। लड़ाई नहीं हुई, वो ये जान भी तो बोलते हैं लड़ाई हुई। आप ये सोचो पूरा आप तहस नहस कर दोगे, पूरा जो उनका खेमा पड़ा हुआ है वहां पर कैंप को कर दोगे। आप फिर बात बोलोगे हाँ लड़ेंगे। पृथ्वीराज तो वहीं पर थे, पृथ्वीराज कोई अजमेर में थोड़ा थे। जी ये कहानी बताई जाती है कि नहीं पृथ्वीराज चौहान से फिर लड़ाई हुई, बाद में ये हुआ। पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने रात को ही बंदी बना लिया था जी। तो लड़ाई नहीं हुई थी, दैट वाज धोखे से लड़ाई। ये लोग तो अपनी जो पंडित और सॉरी बोलना चाहता जो ब्राह्मण लोग बताते, जो लिखा हुआ है, नहीं सुबेरे 9 बजे हम पहले प्रार्थना करेंगे, 10 बजे बोलेंगे नगाड़ा बजाओ, फिर 10:30 बजे लड़ाई करना शुरू करेंगे। उनके पास में थोड़ा था, उन्होंने बोला ठीक है रात को मौका मिलता, रात में साला उल्टा करो इनको, ये था। तो इसीलिए 2.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, बंद करते हैं। पीछे से आपको जितनी बकवास करनी है इजराइल से लेकर के और हमास तक सब कुछ करना है कर लो, ठीक है? मैं बंद करता हूँ। जी जो एंड करिए, और 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रदीप बंद करो जी।
तो आज का अध्याय हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कृपया इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की वंदे और मातरम। मुस्तैद